of March, but he did not appear. He failed to appear before the CBI sleuths, following which a fresh date was given for Saturday. Now, this is a fresh summons that has been issued in the Land for Jobs scam, and Tejaswi Yadav has been summoned in it. The Land for Jobs scam dates back to 2004 and 2009. Shravan Sen joining us, our senior editor on this broadcast. Shravan, it's over to you to take our viewers for more perspective on this. Tejaswi Yadav, just a young boy when the charge sheet was filed, when the scam first came to light. But right now he's clearly in the dock despite all his cries of, political vendetta and victimization. Well, in fact, this comes after the Central Bureau of Investigation had carried out multiple searches. One search was carried out in Gurugram, where they suspected that the proceeds of crime generated from this particular scam was diverted into an under-construction mall. And they believe that this was at the behest of the Deputy Chief Minister of Bihar, Tejaswi Yadav. An allegation that has been completely refuted by Tejaswi. He says that there is absolutely no link whatsoever with this particular under-construction mall. And more importantly, he says that he was, as you rightly pointed out, he was a child when he was in the Land for Jobs scam actually took place, and there is no role that he has essentially played. But the CBI, on the contrary, essentially believes that the money that was generated from this particular scam was actually diverted to various family members of Lalu Prasad Yadav. Now, what exactly is the Land for Jobs scam? When Union Minister Lalu Prasad Yadav was at the helm of affairs of the Railway Ministry, at that point in time, remember, several of these jobs were given within the department to undeserving candidates in lieu of land and also cash that was generated at that point in time. In fact, it turns out that the CBI has basically come across multiple land parcels in the state of Bihar, which have been directly linked to family members of Lalu Prasad Yadav. They were originally it belonged to some of those candidates who finally landed up a job in the railway department. In fact, remember, a private secretary of Lalu Prasad Yadav was also picked up by the Central Bureau of Investigation. In his statement, he has basically admitted that undeserving candidates were actually given the jobs within the department. Shravan, is this the first time that Tejaswi has been summoned? Is this the first time that if he does go in for questioning, will this be the first time in this case? Well, in fact, he was summoned on 4th of February, so which he did not respond summoned. Well, in fact, this was not the first time that Tejaswi Yadav was summoned. In fact, on 4th of February, he was first sent out the summons in the Land for Jobs scam, which he did not honor. And thereafter, he has once again been summoned by the Central Bureau of Investigation. So far, there has been no communication from his side whether at all he's going to respond or appear before the central agency, or he's going to seek for more time. We are waiting for an official confirmation to come in from the agency as well as from Tejaswi Yadav, whether at all he is going to finally appear before the agency. The agency maintains that they have fresh evidence against the Deputy Chief Minister of Bihar, and they are hoping that he is going to make himself available for further questioning. Many thanks, Shravan, for joining us there and for bringing us up to speed with all those details. Moving on now to other top stories. Conman Sukesh Chandrasekhar writes to Delhi LG seeking VK Saxena, seeking his intervention on alleged false news being spread by the Aam Aadmi Party. Sukesh has said, and I quote, Manish Sisodia, everyone should know, is lodged now in Jail 1 Ward 9, which is a VVIP ward in Tihar, where till date only high-profile VVIP persons have been lodged. After Delhi police launched investigation into the molestation video of a Japanese woman that went viral amid Holi celebrations, DCW Chief Swati Maliwal has tweeted, and I quote, "My blood is boiling every time I watch this video. I will not spare any of them, no matter what happens. We will make sure at least one of these ruffians will end up behind bars."
Meanwhile, Delhi police have said they are probing into the video of the harassment of a Japanese woman that went viral. Amid Holi celebrations, they further say that 3 of the boys, including 1 juvenile, have been apprehended. Delhi police say they are waiting for a detailed post-mortem report to know the exact cause of the death of actor Satish Kaushik. A crime team of district police visited the farmhouse in southwest Delhi, where a party was apparently organized, and recovered some medicines, they say. Gujarat Assembly on Friday passed a resolution requesting the centre to take strict action against the BBC for tarnishing the image of Prime Minister Narendra Modi with its documentary on the 2002 Godhra riots. The Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi said in the Assembly that the documentary is against Indian citizens. UP Chief Minister has approved a proposal for the development of world-class infrastructure projects worth 465 crore rupees now in anticipation of a significant increase in the number of tourists visiting Ayodhya. The state cabinet led by CM Yogi approved the proposal. Ahead of the assembly elections, Karnataka Housing Minister V. Somana has hinted at leaving the BJP after his name was not included in the party's election management committee. The elections to the 224-member Karnataka Assembly are slated to be held this year. Police seized 1,300 kg of heroin from a vehicle in Karimganj along the Assam-Mizoram border. 100 soap cases containing drugs from the secret chambers of a vehicle were recovered. 3 people apprehended. A case under NDPS Act registered. Two government employees caught red-handed accepting bribes by a team of the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption in Assam. Case registered in ACB police station on March 10th under Section 120B IPC 7A of Prevention of Corruption Act 1988. Necessary legal action is underway. KPCC Working President R. Dhruv Narayan, 62, passed away in Mysuru this morning. Dhruv Narayan, a former MP representing Chamaraj Nagar Lok Sabha constituency, suffered a cardiac arrest and passed away at his residence in Mysuru. Dhruv Narayan was among the aspirants in the Congress party for a ticket to the Nanjangud Assembly constituency in Mysuru in the upcoming elections. Moving on, Delhi police are awaiting, they say, a post-mortem report on actor-director Satish Kaushik's death to confirm the cause of his passing away. Police have not found anything suspicious so far. A report. On March 9th, Satish Kaushik, who was at a friend's home in Delhi, complained of uneasiness and passed away following a heart attack. Delhi police say they are waiting for the detailed post-mortem report to know the exact cause of death. According to sources, a crime team of the district police also visited the farmhouse in southwest Delhi where the party was organized and recovered some medicines. Sources further added that the party was organized at the farmhouse of an industrialist who is wanted in a case, and the police is going through the guest list. Meanwhile, the police officers are in touch with those who took Satish Kaushik to the hospital. Satish breathed his last in the wee hours of March 9. His body was taken to Deen Dayal Upadhyay Hospital in Delhi for the post-mortem. Bureau Report, Republic TV. And coming up in other news that we're tracking, K. Kavitha being questioned by the ED in connection with Liquorgate. Also, poster war in Hyderabad ahead of K. Kavitha's questioning by the Enforcement Directorate. आप इंडिया आते हैं and then you start special forces, NSG.
गरुड़, मार्कोस, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वॉज एट दैट टाइम CEO of 6AR और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी अच्छा टू ट्रेन हिज रेजिमेंट एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, हाँ जी, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी ऑल्सो। सर, इट्स अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरा मार्शल आर्ट्स बिल्कुल जी। आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना। यू हैव टू कंट्रोल दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग। सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से। I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Arun Ramachandra Pillai and Abhishek Bonpally. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpally? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, वेदर इट्स कुंग फू, वेदर इट्स अदर मार्शल आर्ट दैट यू हैव लर्नड सो मेनी, शाओलिन कितना टफ था? सर बहुत टफ था। वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज। हमारा पहला एक्सरसाइज होता था, 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में, एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल, देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और हमारी टांगें ऐसे हिल रही होती थी, एंड my each and every part of my body was paining, it was crying, muscles were sore। मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था मैं। Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing. Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. Welcome back.
back. Well, the BJP is protesting again in Rajasthan against Chief Minister Ashok Gehlot government's mistreatment of the widows of Pulwama martyrs. The Veer Naris, who were demanding compensation from the state government, are still missing after their detention on Friday early morning. Here's more. Piyush Ori joining me now for the latest on this. Piyush, are there any leads? What are your sources telling you about the kind of action being taken by the government as far as the widows who have gone missing are concerned? So yes, Rukma, the action that has been taken by the Rajasthan government on the widows is unexplainable. It is something which cannot be explained of why actually the Rajasthan government took such a hard stance on the widows of the Pulwama martyrs who laid down their life for the service of the nation. Now what we have been told is that they have been, these widows whose safety is the utmost priority, have been kept in their villages, namely in Bharatpur, Rajasthan and Kota in undisclosed locations, because the Rajasthan government wants to make sure that they do not want to increase the kind of angst which this entire incident has happened. What I'll do is I'll make you have a word with some of the people over here at the BJP protest, because now this entire incident has also taken a political current, because the BJP also wants to make sure that it protests and brings this entire issue in the national eye. So let's just have a word with the people over here and make you have a sense of the mood. Ma'am, आप एक खुद वीरांगना है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती है जो वीरांगनाओं के साथ हो रहा है? जो वीरांगनाओं के साथ हुआ है वो बहुत ही अमर्यादित और गलत व्यवहार हुआ है, और बड़े दुख की बात है कि वीरांगनाएं अपने हक के लिए सड़कों के ऊपर धरने के लिए बैठी हैं, और उन मांगों के लिए जो खुद वो जाके वहाँ जाके घोषणा करते हैं कि ये मांगे ये दिया जाएगा, ये पैकेज है, और उन मांगों को मानने के लिए मनाने के लिए वीरांगनाएं धरने के ऊपर आई हैं। ये बड़े दुख की बात है। आपके पति भी आर्मी में थे, वो 2001 में उन्होंने शहीद प्राप्त की। सर, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप पूरे देश को बताएं कि आपके पति का नाम क्या था, आपके वीर पति का नाम क्या था, और आपकी भी ऐसी कुछ मांगे हैं जो राजस्थान सरकार ने पूरी नहीं की। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भी व्यथा बताइए ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी क्या कारण है कि जो वीरांगनाएं हैं उनकी बहुत सारी मांगे पूरी नहीं कर पाती थी राजस्थान सरकार। मेरा नाम वीरांगना कविता सामोता है। मेरे पति आर्मी में 6 जाट यूनिट में थे और वॉलीबॉल के नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर थे। ऑपरेशन राइनो के तहत मेरे पति शहीद होशियार सिंह सामोता वीर गति को प्राप्त हो गए थे 2001 में, और तब से मैं ही नहीं हर वीरांगना को किसी न किसी रूप में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं स्कूल के नामकरण को लेके, कहीं अनुकंपा नियुक्ति को लेके वीरांगनाएं दफ्तरों के चक्कर काटती हैं, घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन बाद में संवेदनाएं मर जाती हैं और वो दफ्तरों के चक्कर काटती रहती हैं। हर वीरांगना प्रताड़ित है। So you can see over here, Rukma, that even for small little things like naming of school on the name of the martyr, it becomes such a complicated process and it gets embroiled in the bureaucratic process, following which often not only these martyrs' wives, which we are seeing right now, who are facing difficulties, but also several other martyr wives in the past have also faced similar difficulties. It is now going to be interesting to see that now, since this entire issue has taken a political color, with BJP now holding a massive demonstration, what action is the Ashok Gehlot government going to take finally? Because so far, the action that has been taken by the Gehlot government has got many to question of why it is taking the stand what it has on the martyrdom of the soldiers of CRPF who laid down their lives for the duty of the nation. Back to the studio. Right, Piyush. Well, many thanks for bringing us up to speed and for sharing that with us. It's time now for a short break. On the other side, in other news that we are tracking here on Republic, the Federal Deposit Insurance Corporation seized the assets of the Silicon Valley Bank as depositors pull out cash. Li Qiang, close confidant of top leader of China, Xi Jinping, appointed as the country's next premier.
Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka, an MLA's son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLAs. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, गरुड़, मार्कोस, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वॉज एट दैट टाइम CEO of 6AR और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी अच्छा टू ट्रेन हिज रेजिमेंट एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, हाँ जी, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी आल्सो। सर इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा मार्शल आर्ट्स बिल्कुल जी। आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना, यू हैव टू कंट्रोल दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग। सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से। I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Arun Ramachandra Pillai and Abhishek Bonpally. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpally? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, वेदर इट्स कुंग-फू, वेदर इट्स अदर मार्शल आर्ट दैट यू हैव लर्नड सो मेनी, शाओलिन कितना टफ है? सर बहुत टफ था। वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज। हमारा पहला एक्सरसाइज होता था, 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में, एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल, देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और हमारी टांगें ऐसे हिल रही होती थी, एंड my each and every part of my body was paining, it was crying, muscles were sore। मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था मैं। Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka, an MLA's son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLAs.
And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, गरुड़, मार्कोस, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वॉज एट दैट टाइम CEO of 6AR और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी अच्छा टू ट्रेन हिज रेजिमेंट एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. Top stories at 12 p.m. K. Kavita joins the ED investigation in connection with Liquorgate. BRS workers protest at the ED office. Full focus on South Group link and alleged cartelization in connection with the Delhi excise policy scandal. Bihar Deputy Chief Minister summoned by the CBI in connection with the Land for Jobs scam. महिला हैं, भावुक हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या उन पर बीती होगी, तो बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातों को हमने सुनना जाना चाहिए था। तो उनको बैठकर समझाने का काम अगर किया गया होता, मैं समझता हूँ एक बेहतर तरीके से मामले को निपटाया जा सकता था। Sachin Pilot questions Rajasthan Chief Minister Gehlot for mistreatment of the Pulwama martyrs' widows. The Federal Deposit Insurance Corporation seized the assets of the Silicon Valley Bank as depositors pull cash. Cutting across to some breaking updates that we are picking up now, viewers, in connection to the fresh summons that had been issued to Tejaswi Yadav by the CBI. Now we are learning that Tejaswi Yadav has sought for more time to appear before the CBI. He had stated that he cannot appear today as he needs to attend to his wife who is in the hospital. Now that is the latest that we are picking up as far as Tejaswi Yadav is concerned. Remember, we had been seeing how trouble was mounting for Tejaswi Yadav since the Enforcement Directorate as well had been carrying out those raids and searches in Bihar, and now of course we have seen since morning a fresh summons that had been issued by the Central Bureau of Investigation as well. And now Tejaswi Yadav of course claiming that he will not be able to be present there today since he has
to take his wife to the hospital. Let me also bring in our senior editor Shavan Sen as well, who's joining us from the ground as well. Shavan, tell us more about this fresh update that we're picking up, where Tejaswi Yadav has stated that he will not be able to be present before the CBI today, since he has to, he has to look after his wife. He's taking her to the hospital. But speak to us a little bit about the summons that has been sent to him and the trouble mounting for him, not just with the CBI but also with the Enforcement Directorate as well, Shavan. Well, in fact, the first summon that was sent out on 4th of February, turns out that he did not respond to those summons also. Now, the summon that was sent out, he was asked to appear before the central agency in the national capital sometime today. But it turns out that the CBI has now received a communication from the Deputy Chief Minister of Bihar, Tejaswi Yadav, that he'll not be able to respond to the summons today. Perhaps he's now asked for more time because he needs to attend to his wife, who's in the hospital right now. Remains to be seen whether that request is going to be accepted by the Central Bureau of Investigation, and a fresh date would be given to him so that he can appear and perhaps join the investigation. Now, why exactly is the Deputy Chief Minister of Bihar being called in by the Central Bureau of Investigation, especially a scam which basically dates back to 2004 when he was perhaps 14 years old? The question here is that they believe that when Lalu Prasad Yadav was the Union Railway Minister, multiple jobs were actually given to undeserving candidates in lieu of cash as well as land. In fact, the Central Bureau of Investigation, they've come across property papers in the name of Lalu Prasad Yadav's family members, which includes his wife, daughter and also son. Apart from that, the Central Bureau of Investigation essentially suspects that the proceeds of crime that was generated from this particular scam was being diverted through a company that has been linked somewhere or the other to Tejaswi Yadav. And that very money was actually used for constructing a mall in Gurugram, the same very place where the searches were carried out by the Central Bureau of Investigation. But remember, this is an allegation that has been completely refuted by Tejaswi Yadav, saying that first of all, he was a child when this so-called scam actually took place, and more importantly, he has no role to play even after that. He's also dared the agency, saying and that whether at all they have evidence to suggest that this particular company that is under the scanner has any links with Tejaswi Yadav. In fact, I'm told that Chittaranjan from the RJD is joining us. Chittaranjan जी, वापस तेजस्वी यादव को समन किया गया, वो कह रहे हैं कि आज वो नहीं आ पाएंगे. सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं CBI लगातार ये कहती है कि उनके खिलाफ सबूत है उनके पास, और जिसके कारण उन्होंने ये समन भेजे. RJD की इस पूरे मामले पर क्या पोजीशन रहा है? वो जब जनादेश के माध्यम से जिन्हें नहीं वह हरा सकती है, जिनका मुकाबला नहीं कर सकती है, तो CBI, ED, IT का इस्तेमाल कर रही है. जिस समय का मामला है, तेजस्वी यादव उस समय नाबालिग थे, कहीं कोई सियासत से कोई वास्ता नहीं था, इस मामला में उनका नाम भी नहीं था. अब जो है सो CBI के द्वारा बार बार सम्मान कर कर बुलाना, कहीं न कहीं CBI की जो मानसिकता है भाजपा के इशारे पर, उसको यह इंगित कर रही है, क्योंकि जिस मामला से कहीं कुछ लेना देना तेजस्वी यादव को नहीं है, और उस मामले में सम्मान करके बुलाना यह कहीं से भी हजम होने वाली बात नहीं है. तो पूरे देश में जो दल या जो नेता इनके विरोध में खड़ी है, इनका विरोध कर रही है, उन सारे के खिलाफ कहीं CBI, कहीं ED, कहीं IT का इस्तेमाल कर, यह जो है सो 2024 के चुनाव की जो इनकी रणनीति है, सारे नेताओं को इसमें उलझा कर रखो, और उसके बाद जो है सो इनका चरित्र हनन करो, और उस हिसाब से अपना 24 का चुनावी फतह करने के अथी में है. लेकिन जनता सब देख रही है, समझ रही है, और जनता इनको जवाब देगी. ప్రధానమైనటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటుగా నిన్న మనీష్ సిసోడియాను కోర్టులో హాజరుపరిచిన సమయంలో కూడా
Well, that was Chittaranjan of the RJD once again levelling the allegation that if at all the Bharatiya Janata Party does not win the mandate of the people, that's when they essentially use the central agencies. It does appear right now, Priyanka, that perhaps the corruption cases and the investigation against these corruption cases is almost becoming like a glue for the opposition parties. As we speak right now, where we are broadcasting right now from, that's the Enforcement Directorate's headquarters, where BRS leader K. Kavita is being questioned in the liquor scam. Apart from that, you already have the former Deputy Chief Minister of Delhi, who's behind bars. He's now been taken into the custody of the Enforcement Directorate. All of them, I remember, levelling the same charge. Visuals now coming in from the national capital, where there's been a massive show of strength by the BRS once K. Kavita had stepped in. The protests are basically underway of the BRS leaders once again questioning the Bharatiya Janata Party, targeting the BJP, saying that their leader is essentially being victimized only because of some sort of a political vendetta, keeping in mind that the BRS does not really see. We'll try and go across to our reporters on the ground, but what the BRS leaders essentially saying that failing to make much inroad in Telangana right now, the Bharatiya Janata Party is essentially resorting to targeting their leaders, especially with the involvement of various of the central agencies. Let's try and go across to our reporters on the ground. Sambhav, who's been reporting from the protest site right now. We'll try and go across in a short while from now. Over to you, Priyanka. Well, that's right, Shavan. These are some of the visuals that we're putting out on our screens for our viewers to understand, to get an understanding of what's happening on the ground, because of course there is a massive crackdown by the investigating agencies, then be it the ED or the CBI. But as of now, these images of course are coming to light from outside of the ED office, where in fact we had seen that the BRS leaders in fact had been carrying out this protest. They had been stating that K. Kavita being called to the Enforcement Directorate is also a political vendetta. We had seen KCR already crying foul over this summons as well. And as of now, we are looking at these images of the protest. But Shaman, if I could come to you to understand what's really happening inside of the ED office, because these are of course the protest visuals from outside. As of now, K. Kavita is inside of the ED office and her statement, if I'm not wrong, is also being recorded. If you could also throw some light on that from as to what you are also picking up from your sources, as far as what we can expect when K. Kavita is concerned, as her statement is going to be recorded right now. And we had seen KCR already stating that she might be taken into custody right after her statement is also recorded. If you could also speak on that and anything that you're picking up from inside of the ED office from your sources, Shaman. Well, in fact, Priyanka, let me just quickly clarify the point that you made. As far as arrest is concerned or a coercive action against K. Kavita, there's absolutely no word of that coming in from the Enforcement Directorate. Perhaps some political leaders are jumping the guns at this point in time, because this is for the first time K. Kavita is being questioned by the Enforcement Directorate. She was earlier examined, but that was by another agency, that's the Central Bureau of Investigation. So as far as punitive action are concerned, that is certainly not clear at this point in time. What is important right now is that a joint interrogation of K. Kavita and Arun Ramachandra Pillai. Now, Arun Ramachandra Pillai, who happens to be a businessman, was part of the South group. It is he, in his statement, has actually named K. Kavita, and that is the reason why the Enforcement Directorate says that this is a natural process of law, and that is the reason why she's being called in for questioning. Whether some political leaders actually jumped the gun, we've seen the Aam Aadmi Party doing it time and again, where they've essentially
essentially said that the only purpose of calling Manish Sisodia was to arrest him. It did actually happen later in the day, but that was only after the second summons were issued. He had appeared for the second time, that too before the same very agency. I cannot perhaps stick my neck out by saying that there could be a punitive action taken against K. Kavita, because this is for the first time she's going to be examined. Importantly, there are multiple issues that the Enforcement Directorate would be looking into, especially the allegations that have been leveled by her alleged close associate Arun Ramachandra Pillai. In fact, we had taken that question to K. Kavita in our interview, where we did ask her whether she knew Arun Ramachandra Pillai, or for that matter Abhishek Boinpalli, who's also been arrested, to which she hasn't really given a clear answer. She says that she's a political leader, she's met a lot of people. If that's the case, she can't take responsibility for the alleged crimes that have been committed by these people. Let me also quickly bring in my colleague Harsha, who's joining us on this broadcast. She's also been tracking the story very closely. She's been speaking to multiple BRS leaders. Let's understand the political game behind this, because as far as the investigation goes, that's going to continue. But it seems that there is also a massive political war that has erupted on the streets of the national capital, where BRS leaders have come in huge numbers. In fact, KTR, Kavita's brother, is also in the national capital. What more are you picking up, Harsha, in terms of the strategy perhaps being adopted by the BRS leaders, and if at all we could perhaps reach out to some of the BRS leaders and see if they have anything to say? Shaman, so right now outside, the visuals from outside Telangana Bhavan, because a huge protest was planned by BRS leaders and Karyakartas. First it was planned outside DTU Marg, where is a BJP office, but now the protest is happening outside Telangana Bhavan, where the effigy of Bandi Sanjay Garu is being burnt. This is the Bandi Sanjay Garu is the BJP president in Telangana, and 3 days earlier, Shaman, he made a comment after the ED issued summon to K. Kavita, where Bandi Sanjay Garu clearly stated that if someone is doing a crime, they will be punished and not appreciated. Now, BRS Karyakartas are continuously saying that the modesty of women is cautioned and by Bandi Sanjay Garu, and therefore the effigy of Bandi Sanjay Garu is being burnt here along with PM Modi effigy, where they are saying that they are targeting K. Kavita, and the sloganeering and chant against Bandi Sanjay Garu could continuously be heard outside Telangana Bhavan. But on the other side, Bandi Sanjay has issued a statement where they are saying that they are twisting the dialect of Bandi Sanjay, because they have caught his Telugu. In Telugu, he didn't mean that. He have not questioned the modesty of K. Kavita. On the other side, he was saying something else. The BRS is making this entire thing as an issue because they want to create unrest in the state where the security of women is still questionable. And yesterday also, Bandi Sanjay along with others protested in Hyderabad against the law and order which is happening in the state, which is with the unrest which is created in the state by BRS leaders. Now the political war has already started between BRS and BJP. On one side, they are protesting in Hyderabad. On the other side, the protest is also happening in national capital on the streets outside Telangana Bhavan. Shavan, back to you. Well, thank you very much, Harsha. We'll keep coming back to you as we closely track the developments that are taking place outside the Telangana Bhavan, where the protest will continue. Now, this time, the target essentially happens to be the Telangana BJP chief, Bandi Sanjay, who's, remember, they've essentially, the BRS has essentially leveled charges against top BJP leaders, saying that if BL Santosh cannot appear before the SIT that has been formed, then how exactly can anyone expect other leaders to really cooperate? In fact, they've taken a high moral ground, saying that since we have nothing to be afraid of, we are more than willing to subject ourselves before the investigative agencies. That is the reason why she says that she's not knocking the doors of the court at this point in time, because she believes that she would like to rather come clean on this entire matter by appearing before the Enforcement Directorate. She has basically drawn a parallel with that of people like BL Santosh, who she says that the SIT that was formed by the Telangana government, and he was actually called in for questioning
happening. He did not. In fact, he was running around, going back to the courts, looking for some sort of a reprieve. But as far as she's concerned, she says that she's going to take it head on and let this political fight continue. Having said that, the central agencies are indicating that they have nothing to do with the political fight. They have evidence against her, and in fact even the Deputy Chief Minister, former Deputy Chief Minister of Delhi. That is the reason why such kind of actions have been taken by the central agencies. Priyanka. That's right. All right. Thank you so much, Shravan, Harsha, for joining us and breaking down the details of what's really happening on the ground and also what we can expect going forward as the case proceeds further and investigation is done by the agencies as well. For the moment, we shift our focus to what's happened with the Prime Minister. In fact, while he was speaking at a post-budget webinar on the Prime Minister's Vishwakarma Kaushal Samman scheme, the Prime Minister Narendra Modi underlined the need for working in mission mode to help the artisans living in the remote areas and to make them a part of the value chain as well. This is something that has been stressed upon by the Prime Minister time and time again. Here's all that you need to know on the same. सभी स्टेक होल्डर्स ने इस बजट को कैसे सर्वाधिक उपकारक बनाया जाए, इसके क्या रास्ते हो सकते हैं, इसकी सटीक चर्चा की है। ये हमारे लिए लोकतंत्र का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय है। जो चर्चा संसद में होती है, जो चर्चा सांसद करते हैं, वैसे ही गहन विचार जनता जनार्दन से भी मिलना अपने आप में बहुत ही उपकारक ये एक्सरसाइज है। आज बजट का ये वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर, उनके कौशल को समर्पित है। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, और उसको अगर सरल भाषा में कहना है तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये इसी सोच का नतीजा है। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के ऐलान से आमतौर पर व्यापक चर्चा हुई है, अखबारों का भी ध्यान गया है, जो अर्थवेत्ता हैं उनका भी ध्यान गया है, और इसलिए इस योजना की घोषणा ही एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। Time now here for a short break, viewers. Coming up on the other side, BJP protests in Jaipur over Pulwama martyrs' widows and also getting you updates on how the BJP slams Tejaswi after the CBI summons to him. All those details after a very short break. चलना एकदम अच्छी ड्राइव, मजे करेंगे। गाड़ी खराब हो गई और होटल में सिर्फ एक कमरा हो तो मैं जमीन पे नहीं सोऊंगा। तू बिस्तर पे सो जाना, मैं जमीन पे सो जाऊंगी। दारू पिला के तेरा फायदा भी नहीं उठाऊंगी। आई नो तू डर रहा है, बट ट्रस्ट मी, मैं हूँ ना। 11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, whether it's kung fu, whether it's other martial arts that you've learned so many. शाओलिन कितना टफ है? सर बहुत टफ था। वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज
हमारा पहला एक्सरसाइज होता था 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में, एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल, देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और हमारी टांगें ऐसे हिल रही होती थी, एंड माई ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी वॉज पेनिंग, इट वॉज क्राइंग, मसल्स वॉज सोर। मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था मैं। Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka and MLS Sun is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLS. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, गरुड़, मार्कोस, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वॉज एट दैट टाइम CEO of 6AR, और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी अच्छा टू ट्रेन हिज रेजिमेंट, एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी ऑल्सो। सर, इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा मार्शल आर्ट्स। बिल्कुल जी, आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है, बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना, यू हैव टू कंट्रोल दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग, सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से। I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Arun Ramachandra Pillai and Abhishek Bonpally. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpally? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, वेदर इट्स कुंग फू, वेदर इट्स अदर मार्शल आर्ट्स दैट यू हैव लर्नड सो मेनी, शाओलिन कितना टफ था? सर बहुत टफ था। वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज। हमारा पहला एक्सरसाइज होता था 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में, एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल, देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और हमारी टांगें ऐसी हिल रही होती थी, एंड my each and every part of my body was paining, it was crying, muscles were sore। मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था मैं।
Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka, an MLA's son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLAs. And CBI IRCTC और लैंड फॉर जॉब स्कैम में फिर से एक बार तुल पकड़ा है और सीबीआई और ईडी की दबिश जो है लालू परिवार पर कसता जा रहा है। और कल ईडी ने रेड किया लालू यादव के परिजनों के आवास पर दिल्ली में, फिर अबू दुजाना जो उनके पार्टी के हैं यहाँ पटना में। और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, जो कि प्रॉब्लम है। स्टार्ट हुई है और सीबीआई का भी दबिश बढ़ता जा रहा है और लालू परिवार जो कह रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जा रहा है। ये तो एक रटाया वाक्य है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लालू यादव तो 4 मामलों में सजा याफ्ता है और चारा घोटाला को उजागर किसने किया? नीतीश कुमार और ललन सिंह ने उजागर किया। पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए कौन गए? जनता दल के लोग गए, समता पार्टी के लोग गए, सीबीआई जांच हुई और लालू यादव को कोई बचा नहीं पाया। ना मनमोहन सिंह बचा पाए, ना देवगौड़ा बचा पाए। और लालू यादव को एक नहीं 4 मामलों में सजा हो गई और अब वो मुखिया का भी चुनाव नहीं कर सकते। अब देखिए, लालू यादव आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति है और उनका एक ही नारा था, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुझे काम दूंगा। एमएलए बनना है तो जमीन दो। तो कांति सिंह को मंत्री बनाना था, जमीन लिखवा लिया, मकान लिखवा लिया। रघुनाथ जैसे को मंत्री बनाना था तो गोपालगंज का मकान लिखवा लिया। और रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने दर्जनों लोगों को नौकरी दी रेलवे के अंदर, उसके बदले में जमीन लिखवा लिया। यही मामला है, नौकरी के बदले जमीन का जो मामला है। और तो देखिए, सीबीआई के पास तो प्रमाण, पुख्ता प्रमाण है और ये प्रमाण देने वाले तो ललन सिंह है। 2008 में स्वर्गीय शरद यादव और ललन सिंह के दोनों लोग गए थे मनमोहन सिंह से मिलने के लिए। उनको लिखित ज्ञापन दिया, डॉक्यूमेंट दिया, लेकिन मनमोहन सिंह बैठ गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। और फिर 2014 तक चूंकि लालू यादव की पार्टी के समर्थन से चलने वाली यूपी की सरकार थी, जब सरकार बदली और ललन जिस समय हम लोग के साथ थे, फिर दोबारा उन्होंने कागजात दिया। और देखिए, इस मामले में जो प्रारंभिक जांच प्रारंभ हुई है, वो जांच प्रारंभ हुई है, वो जांच 23 सितंबर 2021 को। और ललन जी ये जो कह रहे हैं कि जब से महागठबंधन बना तब से कार्रवाई हुई, तो गलत बोल रहे हैं। प्रारंभिक जांच सितंबर 2021 में प्रारंभ हुई, जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। और इस केस का FIR कब दर्ज हुआ? तो 18 मई 2022 को, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। तो इससे कोई इसका संबंध नहीं कि वो बीजेपी के साथ रहे या जदयू के साथ रहे, किसके साथ रहे। और IRCTC घोटाले के बारे में जो नीतीश कुमार कर रहे हैं कि 5 साल हो गया, क्या हुआ? नीतीश जी 2 साल तो देश के अंदर कोविड था, कोविड की महामारी थी, कोर्ट बंद पड़े थे, सारी कार्रवाई स्थगित थी। तेजस्वी यादव को बिल लेना पड़ा, चार्जशीटेड है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले के अंदर। उस केस का चार्ज फ्रेम हो चुका है, उस केस का ट्रायल प्रारंभ होने जा रहा है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। और ये दूसरा मामला है, ये नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है। और लालू यादव का नारा, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। नीतीश जी के सुर क्यों बदले हुए? वो कह रहे हैं, पहले 2017 में उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव को, जब सीबीआई रेड हुई थी लैंड फॉर जॉब और IRCTC मामले में, तब साक्ष्य भी मिले थे तेजस्वी यादव के घर से, तो उन्होंने कहा था एक्सप्लेन कर दीजिए। अब कह रहे हैं कि 5 साल में कुछ हुआ नहीं, जब हम लोग आ गए तो फिर से कार्रवाई शुरू की। तो ये हमेशा सुर ताल जो बदलते रहते हैं नीतीश जी। उनको प्रधानमंत्री बनना है, उनको लगता है कि बीजेपी के साथ रहकर तो प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन शायद कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने राजद कांग्रेस के साथ जाकर सच सकता है।
इसलिए भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े हो गए। तो जिस व्यक्ति की पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में लगी, आज वह व्यक्ति भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। वो व्यक्ति लैंड फॉर स्कैम के समर्थन में खड़े, जिन लोगों ने कागज उपलब्ध कराया। तो मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या टीका टिप्पणी करूं? मुझे मेरे मन में बड़ा आदर उनके प्रति, लेकिन उस प्रकार से इनका ये जो उलटते पुलटते रहते हैं, कभी लालू के साथ, कभी लालू के विरोध में, कभी बीजेपी के साथ, कभी बीजेपी के विरोध में। ललन सिंह, ये तो उनके सबसे बड़े सिपा सलार थे, जो कागज लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक गए, घूमते रहे, कहाँ नहीं गए, और आज कह रहे हैं कि लालू निर्दोष है। तो हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूँ नीतीश कुमार और ललन सिंह को कि वो सार्वजनिक घोषणा करे कि लालू यादव को चारा घोटाले में हमारे फर्जी कागजात के आधार पर फंसा दिया गया, वो निर्दोष है, उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया था। है तो हिम्मत घोषणा करें वो। लेकिन देखिए, इसलिए CBI जो कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला ठोस प्रमाण है, इसलिए उनको बेल देना पड़ा। और ये लोग तो चाहते हैं कि देश में ऐसा लोकतंत्र आए जहां भ्रष्टाचार करने की खुली छूट मिल जाए। नहीं, तो लालू जी का एक हमने सोशल मीडिया हैंडल पर देखा है एक बयान, उसमें कहा है उन्होंने कि गर्भवती महिलाएं जो बहू है उनकी, और उसके बाद उनकी बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है, और CBI को एक तरीके से केज्ड पैरट बताया है, तोता। तो इस तरह की कार्रवाई जब चुनाव आता है, और हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, न ही मेरा कोई परिवार का व्यक्ति झुकेगा। क्या ये पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा है? जब चुनाव आता है, झुके या न झुके, कौन झुकने के लिए कर रहा है? लेकिन आपके खिलाफ जो मामले, उसका जवाब तो दीजिए। और आखिर बताना चाहिए लालू यादव को कि वो 25 साल के अंदर या 30 साल के अंदर 141 भूखंड, 141 जमीन का टुकड़ा, 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकान के मालिक कैसे बन गए? तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि 29 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? कल ईडी ने जिस मकान में रेड किया, जो D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली की पॉश कॉलोनी का 4 मंजिला शानदार मकान जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपया है, उसके मालिक तेजस्वी यादव कैसे बन गए? और आखिर रेड के अंदर अगर 53 लाख नगद मिलता है, 550 ग्राम सोने का बिस्किट मिलता है, 1.5 किलो गोल्ड ज्वेलरी मिलती है, तो आपके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। आपने न तो कभी नौकरी की, न तो कभी आपने व्यापार। तेजस्वी तो कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता था, मेरा मूछ भी नहीं था उस समय। तो क्रिकेट में इतना पैसा किसी को मिला है क्या? जो क्रिकेट के अंदर है, क्रिकेट के मैदान से बाहर कर दिए गए, तो क्यों नहीं क्रिकेट में रहते? वो कितना कमा लिया क्रिकेट के अंदर कि 53 संपत्ति के 52 संपत्ति के मालिक बन गए, दिल्ली में 100 करोड़ के मकान के मालिक बन गए। तो यह पूरी जिंदगी खप जाती क्रिकेट खेलते खेलते, तब तो लोगों को इतनी संपत्ति बना ही नहीं पाते। और इन्होंने केवल 29 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक। आज उनको सम्मान किया गया है CBI के, आज उनको सम्मान किया गया है CBI। So, well, that's an exclusive Republic interview. Sushil Modi of Bihar speaking with Prakash Singh, our senior editor, special projects on Tejaswi Yadav, the CBI summons to Tejaswi Yadav, and Sushil Modi there saying that Tejaswi and the RJD as a whole need to answer many questions, not just them, but Nitish Kumar as well. And Nitish Kumar has come out in defense, in fact, of Tejaswi Yadav. Now a complete change of stance. Let's listen in to what the Bihar Chief Minister had to say about this entire issue. आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ था, फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ? अब काहे नहीं उस समय हुआ था? Nitish Kumar there clearly, well, he's questioning the CBI action now. He says that well, as you can see, Tejaswi Yadav now in the dock. He has evaded the summons today, not appearing before the CBI. Let's move on now to other top stories. Conman Sukesh Chandrasekhar has written to Delhi LG VK Saxena, seeking his intervention on alleged false news being spread by AAP. Sukesh has said, and I quote, Manish Sisodia, everyone should know, is lodged now in Jail 1 Ward 9, which is a VVIP ward in Tihar, where till date only high-profile VVIP persons have been lodged. After Delhi police launched an investigation into a molestation video
that had gone viral amid Holi celebrations. DCW Chief Swati Maliwal tweeted, and I quote, "My blood boils every time I watch this video. I will not spare any of them no matter what happens. We will make sure one of these ruffians ends up behind bars." Delhi police say they are probing the video of the harassment of a Japanese woman that went viral amid Holi celebrations. Police further say that 3 boys, including 1 juvenile, have been apprehended in this regard. Delhi police say they are waiting for a detailed post-mortem report to know the exact cause of the death of actor Satish Kaushik. A crime team of district police visited the farmhouse in southwest Delhi, where the party was organized, and recovered some medicines. Gujarat Assembly on Friday passes resolution requesting Centre to take strict action against the BBC for tarnishing the image of Prime Minister Modi with its documentary on the 2002 Godhra riots. The Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi said in the Assembly that the documentary is against Indian citizens. Uttar Pradesh Chief Minister approves proposal for development of world-class infrastructure projects worth 465 crore rupees. In anticipation of a significant increase in number of tourists visiting Ayodhya, State Cabinet led by CM Yogi approves the proposal. Ahead of the Assembly elections, Karnataka Housing Minister V. Sommanna hints of leaving the BJP after his name was not included in the party's Election Management Committee. Elections to 224-member Karnataka Assembly are slated to be held this year. Police seize 1.300 kg of heroin from a vehicle in Karimganj along the Assam-Mizoram border. 100 soap cases containing drugs from the secret chambers of a vehicle were recovered. 3 people apprehended. Case under NDPS Act registered. Two government employees caught red-handed for accepting bribes by team of Directorate of Vigilance and Anti-Corruption in Assam. Case registered in ACB police station on March 10th under Section 120B IPC 7A of Prevention of Corruption Act 1988. Necessary legal action is underway. KPCC working president R. Dhruv Narayan, 62, passed away in Mysuru this morning. Dhruv Narayan, a former MP representing Chamarajanagar Lok Sabha constituency, suffered a cardiac arrest and passed away at his residence in Mysuru. Dhruv Narayan was among the aspirants in the Congress party for a ticket to the Nanjangud Assembly constituency in Mysuru in the coming elections. Stay tuned as we bring you all the news on K. Kavita being questioned by the ED in connection with Liquorgate. Also poster war in Hyderabad ahead of K. Kavita's questioning. प्यार करना है टाइम पास करना है। टाइम पास भी ऐसी किसी के भी साथ तो नहीं कर सकती ना, उसकी भी लाइक कोई मिलना चाहिए ना। You mean मेरे जैसा कोई हैंडसम, गुड लुकिंग, रिच, लवेबल, हम्बल, रिस्पेक्टफुल, रोमांटिक, प्यारा और लवेबल सेम होता है। मैं दोनों हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। 11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. I see there are 2 pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Arun Ramachandra Pillai and Abhishek Bonpal. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpal? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power.
ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, whether it's kung fu, whether it's other martial arts that you've learned so many. शाओलिन कितना टफ था? सर बहुत टफ था। वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज। हमारा पहला एक्सरसाइज होता था 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में, एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल, देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और हमारी टांगें ऐसी हिल रही होती थी, एंड माई ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी वॉज पेनिंग, इट वॉज क्राइंग, मसल्स वॉज सोर। मतलब उस वक्त में कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था मैं। Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka, an MLS son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLS. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, NSG, गरुड़, मार्कोस। किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वॉज एट दैट टाइम CEO of 6AR, और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी। अच्छा। टू ट्रेन हिज रेजिमेंट, एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how is And news that's coming in, the BJP is protesting against the Gehlot government's ill treatment of Pulwama martyrs' widows in Rajasthan. The Veer Naris who are demanding compensation from the Rajasthan government are still missing after their detention in the early morning hours of Friday. And to tell us more on the latest with regards to the story is my colleague Piyush Ohri, who's joining me from the protest site. Piyush, earlier you were telling us that you do have some details from your sources about the presence of where exactly the Pulwama martyrs are, who have since disappeared. So can you confirm this? Are they at undisclosed locations in Bharatpur still? Also an update on the protest and the kind of turn it has taken. So yes, Rukma, let me just, while I speak, I will ask you to show the visuals over here by my video journalist Vijay Narudeshwar, and you can see that there is hordes of BJP workers that have now come as BJP Rajasthan is officially also planning and preparing itself for fighting the assembly elections that is going to be coming into the state in just few months. But that is not important. What is more important is that will the honor and demands of the Veer Naris, will the demands and honor of the widows of the CRPF martyrs be met? Now what we have been told is that the Rajasthan police, in order to make sure that the situation does not get aggravated much, has kept them in undisclosed locations at their hometowns, which is in Jaipur, Outer, Kota and Bharatpur. As of now, we have been told that this location at which they have been kept is secret because the Rajasthan police does not want the situation to get vitiated much. But this only highlights about how badly the Ashok Gehlot government has treated the entire matter. One may feel that the demands of the widows
may be complicated and all demands cannot be met. But what cannot be explained and what really cannot be pardoned is that why Ashok Gehlot is not meeting these brave widows and is taking a very insensitive stand towards the handling of these brave widows. Because in these last few days, we have seen brave widows being abused. We have seen these brave widows being manhandled by the male police officials. And now it becomes a major responsibility for the Ashok Gehlot government to just correct its stand. And while it does so, the BJP is also finding an opportunity to prepare itself for the assembly elections. And the proof of this you can see at this massive rally which is being held over here at its headquarters. Back to the studio. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी ऑल्सो। सर इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरा मार्शल आर्ट्स बिल्कुल। जी आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना। यू हैव टू कंट्रोल दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग। सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से। I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Anil Parab and Abhishek Bonpal. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpal? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, वेदर इट्स कुंग फू, वेदर इट्स अदर मार्शल आर्ट दैट यू हैव लर्नड सो मेनी, शाओलिन कितना टफ था? सर बहुत टफ था। वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज। हमारा पहला एक्सरसाइज होता था 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में, एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल, देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और हमारी टांगें ऐसी हिल रही होती थी, एंड my each and every part of my body was paining, it was crying, muscles were sore। मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था। Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka, an MLS son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLS. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, गरुड़, मार्कोस, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वाज एट दैट टाइम। कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी ऑल्सो। सर इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरा मार्शल आर्ट्स बिल्कुल। जी। आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना। यू हैव टू कंट्रोल दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग। सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से। Welcome back. You're watching Republic TV. In other news, international news,
Latest updates from the Ukraine war. Ukrainian soldiers and tank crews took a brief respite on Wednesday as the conflict rolled on near the Ukrainian city of Tejaswi. As Russian forces continued their attempts to encircle Bakhmut, Ukrainian service personnel are determined to fight back as long as it's needed. Fighting in the Ukrainian city of Bakhmut has escalated. Earlier, Russian forces attacked the town with S-300 missiles and cluster munitions. And thus, the determined Ukrainian troops fights back with fire artillery at Russian positions. While the muddy fields and weather causes hindrance to use armored vehicles, paratroopers' determination rages on. Watch how the paratroopers fired a powerful howitzer 2S1 towards Russian positions on the front line as well as soldiers in their dugouts. As a result of the shelling, 8 civilians were injured and about 14 houses, 9 cars, a gas pipe, garages, outbuildings and civil infrastructure were completely destroyed. Agency report for Republic TV. Coming up, the Federal Deposit Insurance Corporation seizes the assets of Silicon Valley Bank as depositors pull cash. Also, full focus on South Group link and alleged cartelization in connection with Delhi excise policy scam. Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी आल्सो. सर, इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. पूरा मार्शल आर्ट्स. बिल्कुल. जी. आपकी फौज में भी यही है. डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू. आपके पास गन है, बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना. यू हैव टू कंट्रोल दैट. दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग. सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम. यस. किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से. I see there are 2 pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Arun Ramachandra Pillai and Abhishek Bonpally. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpally? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, वेदर इट्स कुंग फू, वेदर इट्स अदर मार्शल आर्ट दैट यू हैव लर्नड सो मेनी. शाओलिन कितना टफ था? सर, बहुत टफ था. वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज. हमारा पहला एक्सरसाइज होता था, 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में. एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल. देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर. और हमारी टांगें ऐसी हिल रही होती थी. एंड my each and every part of my body was paining. It was crying. Muscles were sore. मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था मैं.
Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka, an MLA's son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLAs. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, गरुड़, मार्कोस, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वाज एट दैट टाइम CEO of 6AR और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी, अच्छा, टू ट्रेन हिज रेजिमेंट एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी आल्सो। सर, इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा मार्शल आर्ट्स। बिल्कुल जी, आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना, यू हैव टू कंट्रोल दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग। सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से। I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Arun Ramachandra Pillai and Abhishek Bonpally. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpally? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. K. Kavita joins the ED investigation in connection with the liquor gate. BRS workers protest at the ED office. Full focus on South Group link and alleged cartelization in connection with the Delhi excise policy scam. Bihar Deputy Chief Minister summoned by the CBI in connection with land for job scam. हैं, भावुक हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या उन पर बीती होगी, तो बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातों को हमने सुनना जाना चाहिए था। तो उनको बैठकर समझाने का काम अगर किया गया होता, मैं समझता हूँ एक बेहतर तरीके से मामले को निपटाया जा सकता था। Sachin Pilot questions Rajasthan Chief Minister Gehlot for mistreatment of Pulwama martyrs' widows. The Federal Deposit Insurance Corporation seized the assets of the Silicon Valley Bank as depositors pull cash.
Straight away cutting across to some breaking updates that we're picking up, viewers. From the national capital to Hyderabad, BRS leaders are staging protest against the BJP state president Bandi Sanjay for making derogatory comments against K. Kavita, who is in the ED dock for the Liquorgate scandal. Now, Bandi Sanjay said, few journalists asked me if Kavita would be arrested. If or not arrested, should Kavita be kissed? His objectionable remarks have now triggered a massive controversy. Responding to the same, Bandi Sanjay has also released a statement that reads, and I quote, "Some of the statements made by about 3 days ago are being blown out of proportion." This is a common phrase used in Telugu language, which means if someone does a crime, would you appreciate or punish? Now, the BRS party, which is well aware of the dialect, is deliberately portraying it as an insult to women's modesty. This is a diversion tactic to create unrest in the state, as Chief Minister's daughter is summoned by the Enforcement Directorate in Delhi in the excise policy scandal. And those are the visuals that we're putting out on your screens of the protesters, the BRS leaders, workers also carrying out these kind of protests, burning effigies. And we have seen the aggressive protests that they were also carrying out right outside the Enforcement Directorate office. But these are images this time around from Hyderabad as well. Let me go across to my colleague Aneri, who's on the ground reporting on this story. Aneri, take us through these images that we are getting right now of the BRS workers carrying out this protest. We see that there is a lot of effigies also being burnt. Over to you. Before I go to you, Aneri, we are getting several voices on this big story. Let's first up listen in to what Bandi Sanjay had to say. Then I'll come back to you for breaking updates. All right, let me first up once again go across to my colleague Aneri, who's on the ground reporting for us and getting us these images of this aggressive protest that we are looking at right now. Aneri, over to you. Walk us through these images of the protests being carried out by the BRS workers and what exactly are they protesting, and these remarks that were made as well as and what are the demands that are being also made by the BRS workers there. Well, Priyanka, we have been seeing how there has been a massive face-off since the time ED had issued summons to the BRS MLC and also the daughter of Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao over the liquor scam. But then recently we had seen that Bandi Sanjay had also made a few comments against K. Kavita, and now we are seeing that how BRS cadres have been staging protests not only in the national capital but also here in Hyderabad. They have been staging protests over the comment made by Bandi Sanjay, and also at the same time the leaders here, the cadres of the Bharat Rashtra Samiti, have been raising questions on the central government over the ED summons to K. Kavita, and also at the same time we have been seeing that how there are posters which are put up here against Bandi Sanjay. But not to forget, Priyanka, we have been seeing that this is not the first time where Kavita is being questioned. Earlier, back then in 2022 December, we had seen Kavita being questioned by the CBI in the same Liquorgate scam. But then now when we talk about the ED summons which had been issued on the 8th of March, and she was asked to appear on the 9th of March in front of the Enforcement Directorate, but then she had sought for more time. Right, Aneri, but if I could also shift your focus, Aneri, if I could also shift your focus to this very shocking statement that had also been made by Bandi Sanjay, and if you could put that into context for us, because now he is stating that this is being blown out of proportion, that this is a word that he used in the Telugu dialect. If you could explain that to us and for our viewers to understand what he had said and what he is claiming has been blown out of proportion. Well,
Priyanka, what BJP State President Bandi Sanjay had very clearly given a statement a few days back while addressing a gathering. He had said that when a few of them had asked me whether K. Kavita would be arrested, then he replied to it saying that if she won't be arrested, then what will she be? Because that is the language which was used by BJP State President Bandi Sanjay. Well, and now issuing a clarification over it, we see that Bandi Sanjay has issued a statement saying that all of this has been blown out of proportion, and this is a very common language which is used, a common phrase which is being used in the Telugu language, and that is why it was not in any other context. However, the BRS leaders are trying to divert the attention from the questioning of K. Kavita, is what the statement of Bandi Sanjay reads. But then we are seeing that this statement of Bandi Sanjay has definitely blown a lot of anger among the BRS cadres. As you can see right now, the BRS cadres here are staging protests and raising slogans against Bandi Sanjay, and also at the same time they have been saying that the comments which are made by Bandi Sanjay, he should now apologize to K. Kavita over this particular comment which was made by Bandi Sanjay. Aneri, those are very important details and images that you're getting to us from the ground. I implore you to stay with us and keep getting us those images. We'll keep coming back to you as and when this story develops. As of now, shifting our attention to what's really happening when it comes to the BJP protesting in Rajasthan. We're getting some more breaking updates on that front and some breaking visuals that we're putting out on your screens right now, viewers. The BJP is in fact protesting against the Gehlot government's mistreatment of the Pulwama martyrs' widows and the Veer Naris who are demanding compensation from the Rajasthan government are still missing after their detention on Friday early morning. Let me bring in my colleague Piyush Ori, who's on the ground reporting on this story. Piyush, tell us more about the condition of these protesters as well, because we still see a lot of protests being carried out. We still see a lot of back and forth when it comes to the political narrative being shifted between Sachin Pilot and Ashok Gehlot as well. But when it comes to the martyrs' widows, where are they right now? Because we were learning very concerning details that the police had detained them. They had taken them to an undisclosed location. This is a very unprecedented way that the police is also functioning. Tell us more about what's happening right now on the ground. Well, you raised two important questions, Priyanka. And what I can tell you is from the visuals over here, which you can see from my video journalist Vijay Narudeshwar, that actually the preparations for the upcoming assembly elections in Rajasthan has begun. And the Bharatiya Janata Party over here has taken the issue of insult of our Veer Naris at the hands of Gehlot government for preparing itself for the upcoming assembly election. So you can see over here that there are some dramatic visuals where hundreds of BJP workers are trying to surround or gherao the Ashok Gehlot's official residence. But that is not an important point. The most important point is that taking aside these political theatrics, which we are going to be seeing now quite often as the state prepares itself for the upcoming assembly elections, will the honor and the respect for the Veer Naris or the widows of the CRPF martyrs be restored? As of now, it seems that no one is talking about them. Yes, they are getting a mention at the rallies which many of the political leaders in Rajasthan are making, but actually no one is talking about where exactly they are. As what we have been told right now, they are being kept in their undisclosed locations at the residences because the Rajasthan government and the administration wants to make sure that they do not want to aggravate the situation much, because this situation has already left an embarrassing situation for the Ashok Gehlot government, where it has been felt that the Ashok Gehlot government, because he feels that these three martyrs have got a political affiliation with Bharatiya Janata Party, that's why he does not want to talk to them also. So yes, it's a very insensitive stand which has been taken by the Ashok Gehlot government. But more importantly, now you can also see from the visuals over here that the assembly election preparation has also begun, and the first major issue which the Bharatiya Janata Party has taken is respect for our Veer Naris. Back to the studio.
Well, that being said, Piyush, if you could keep panning your cameras and also get us some voices there as to who is there right now, what is the protest all about, and is there anyone at all demanding to know where these protesters were, where the widows of the martyrs are right now, because it is alarming that you're still telling us that no one seems to know where they are. So as what we have been told, Priyanka, is that they have been kept in an undisclosed location at their hometowns. Now these three widows, namely Manju Jat, Sundari Devi and Madhubala, had come from locations of Jaipur Outer, Kota and Bharatpur. Now what we have been told is that after being given medical treatment by the Rajasthan police, after they were forcefully detained at 3 a.m. on Friday, they were taken to their hometowns and kept in an undisclosed location. Now, where exactly are these places? It has still not been known to us, and the Rajasthan police also does not want to tell us that where exactly they have been kept. But having kept that aside, what is really happening over here right now, from the visuals over here, which you can see, that the BJP workers and leaders now want to make this an issue and want to prepare and want to come and start preparing for the upcoming assembly election. The key point, however, will continue to remain that from leaving aside these political theatrics aside, will the honor, respect and now even the security of these three brave Naris, of these three Veer Naris be restored, or it is only going to get brushed aside as the political slugfest between the BJP and the Congress now intensifies. Back to in the studio. All right, Piyush, also keep talking to us about how it is also now being demanded by the BJP for some kind of accountability to be taken by the Ashok Gehlot government. And it is also very interesting to note as to what Sachin Pilot had to say and how he had taken a veiled dig at Ashok Gehlot as well, as to how Ashok Gehlot had insensitively dealt with the matter as well. Expand upon that for our viewers to understand how the political war of words also is breaking out, but also the BJP on the ground demanding that Ashok Gehlot government takes accountability for the same. Well, Priyanka, Bharatiya Janata Party being the main opposition party would continue to criticize and would continue to be critical of the Ashok Gehlot government, and especially now taking into consideration of the way it has dealt the entire matter of dealing with the brave Naris. The criticism is only going to grow further. But what is more important to note is the tacit criticism the Deputy Chief Minister of Rajasthan, Sachin Pilot, has brought out. In fact, he rightly mentioned that the way police dealt with the entire matter was not right, and it was incumbent upon the Chief Minister to have a word with the protesters and the Veer Naris. Let me just have a word with some of the workers also over here and get a sense of what exactly do they feel. आप बीजेपी वर्कर हैं? जी। आपको क्या लगता है ये जो वीरांगना के साथ हुआ है ये ठीक हुआ है, और आपको लगता नहीं कि अशोक गहलोत जी को कम से कम उनसे बात करनी चाहिए थी? स्वतंत्र भारत में ये पहली ऐसी घटना है जिसमें देश की वीरांगनाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है। ये शर्म, जितनी शर्म की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो मांग क्या रही थी? वो तो मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रही थी। लोकतंत्र में हम लोग अपने प्रतिनिधि से, मुख्यमंत्री से, सीएम से मिलने का समय मांग सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मैम, ये वीरांगनाओं का ही सवाल नहीं है, ये महिला सम्मान की बात है, क्योंकि जिस तरह से वीरांगनाओं के साथ ये पुलिसकर्मियों ने बर्ताव किया है ये उचित नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी गहलोत सरकार ने किया है हमारी वीरांगनाओं के साथ, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, महिलाओं की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके कोई वरिष्ठ अधिकारी है बीजेपी के जो उनसे मिले हैं? हमारे सभी संगठन, सारा कार्यकर्ता एक साथ है। आप तो साथ हो, और अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो मुझे मालूम है कि वो एकता एक और बढ़ेगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उन वीरांगनाओं से कोई बीजेपी अधिकारी जाके मिला है? क्या उनको मिलने? किरोड़ी लाल जी है ना, इतने बड़े सांसद, हमें किसी की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा पूरा संगठन आज उनके साथ। हाँ जी, किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे मसीहा है, वो 36 को हमको सपोर्ट करते हैं।
आप कुछ बोलना चाहेंगे? साहब, आप एमएलए हैं, आप मेरे को बताइए राजस्थान में हो क्या रहा है? ये जो वीरांगनाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आपको लगता है ये उचित है? और मैं आपसे एक और चीज देखिए, कतई उचित नहीं है। ये सरकार गूंगी बेरी है, असंवेदनशील है, वीरांगनाओं की बात भी सुनना नहीं चाह रही। सरकार वीरांगनाओं से बातचीत करने से डर रही है। जो सेना के सैनिक, अच्छा, मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स चलती रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके कोई नेता उनसे जाके मिले हैं? हमें जरा देश को जानना है कि उनकी सुरक्षा का क्या हाल है। विधानसभा के दौरान भी हमारे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी और हमारे साथी विधायक वीरांगनाओं से धरने पे मिलके आए। सदन में भी अभी वो कहाँ पर है? अभी वो कहाँ पर है? और अब अभी वो कहाँ पर है? राजेंद्र राठौड़ जी, मैं आपसे पूछा था अभी कहाँ पर है वीरांगनाएं? उनकी हालत ठीक है? वीरांगनाओं से मिलने के लिए किरोड़ी लाल जी जा रहे थे, उनके साथ पुलिस ने जिस तरह की बदसलूकी की है और वीरांगनाओं को जांच के बहाने जिस तरह उठाया है, ये लोकतंत्र के माथे पे काला टीका है। Okay. So I would now request again my video journalist to just show the images over here, dramatic visuals. And as you can see, Priyanka, that the preparation for the assembly elections has begun in Rajasthan, with BJP workers now trying to go and surround the Chief Minister house over here in Jaipur. But the key question now is that will this political slugfest ultimately result in restoring the honor of our Veer Naris? That is $1 million question, which not only the present Ashok Gehlot government, but even BJP would have to answer in the time to come. Back to in the studio. Well, absolutely, Piyush, and it's not just an emotional question but a legal one as to how the police can actually take them to an undisclosed location and stop people from visiting them, or also stop them from protesting as well, because it seems as though nobody seems to know what they were demanding, why they were there, because we just know that Ashok Gehlot government in fact has treated them in this manner. The visuals of which viewers were putting out on your screens, the left of your screens, you can see how the police had been detaining these Veer Naris who are still missing. And it's important to note that they're still missing, and we see on the right side of your screens how there are several protests that are being carried out by the BJP as well on the ground. And Piyush, our correspondent, is on the ground getting us those voices, getting us those important updates when it comes to the location of the Veer Naris as well. Piyush, I implore you to also speak to us a little bit about the authorities' reaction or any statement that you might have been able to get from the police as well. Or has anybody from the Sachin pilot camp also taken up the responsibility? Because in the morning, he had been calling out Ashok Gehlot's behavior towards the Veer Naris as a bad way to actually behave with these people. But has he really also done anything? Has he said anything? Any authorities that have given you any statement or any information that you're picking up there on the ground, Piyush? Well, Priyanka, such has been a high-handed approach of the Rajasthan police, and such has been an unexplainable stand which has been taken by the Rajasthan police, that when we spoke to them in front of the Veer Nari Banju Jat of why actually did they behave indecently with these three Naris, we were manhandled and we were asked to leave the spot where these three Naris that time were protesting. So yes, the stand which has been taken by the Rajasthan police has been quite despicable to say the least, and it has to answer many questions of why it has acted the way it has. Having said that, the Sachin pilot camp also on its play side has continued to take a very defensive stand, and in a very tacit manner criticized Ashok Gehlot government of the way it has treated the entire matter. In fact, what they Sachin pilot in a very defensive manner has said that yes, the demands could have been complicated, that all demands could not have been met in entirety, but what is definitely not acceptable is the way Ashok Gehlot has not even taken out time to meet and speak to these three Veer Naris. And now as I speak to you, I would again request my video journalist to show the visuals over here. As you can see, the dramatic visuals of how the BJP workers are trying to create, many BJP workers have come over here. They are trying to surround the Chief Minister office here at Jaipur, and they have been stopped by the police. So yes, you can see the dramatic visuals. The protest is only going to now increase further from here on, because the state is all set for the assembly elections. But again, as I said, the key priority of Republic TV would be to first ensure that the honor
respect and even the safety of our Veer Naris be restored. And right now they are being kept at the undisclosed location. It is important for the BJP leaders also to make sure that the safety is also maintained. Back to in the studio. All right, Piyush Shori there getting us the updates and the visuals that we're putting out on your screens right now, viewers, of this protest being carried out by the BJP in Jaipur, where they are in fact protesting against the Ashok Gehlot government for their demeanor and their behavior towards the Veer Naris who were in fact carrying out the protest, the widows of the martyrs of the Pulwama attack. And of course, we have seen the kind of statements and counter statements that were made by Sachin Pilot and the allegations also leveled against the Ashok Gehlot government. We're slipping into a very short break, but we continue to get you these dramatic visuals coming to light from Rajasthan. $11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, गरुड़, मार्कोस. किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वाज एट दैट टाइम CEO of 6AR और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी. अच्छा. टू ट्रेन हिज रेजिमेंट एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो. जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा. एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम. Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी आल्सो. सर, इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. पूरा मार्शल आर्ट्स. बिल्कुल. जी. आपकी फौज में भी यही है. डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू. आपके पास गन है, बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना. यू हैव टू कंट्रोल दैट. दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग. सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से. I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Arun Ramachandra Pillai and Abhishek Bonpally. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpally? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, whether it's kung fu, whether it's other martial arts that you've learned so many. शाओलिन कितना टफ था? सर, बहुत टफ था. वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज. हमारा पहला एक्सरसाइज होता था, 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में. एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल. देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर. और हमारी टांगें ऐसे हिल रही होती थी. एंड my each and every part of my body was paining. It was crying.
मसल्स वर सोर, मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था। Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka, an MLS son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLS. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, NSG, गरुड़, मार्कोस। किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वाज एट दैट टाइम CEO of 6AR, और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी। अच्छा। टू ट्रेन हिज रेजिमेंट, एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुखरी ट्रेन करो। जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी आल्सो। सर, इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरा मार्शल आर्ट्स, बिल्कुल। आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है, बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना। यू हैव टू कंट्रोल दैट। दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग। सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग। Welcome back, viewers. We're straight away cutting across to these visuals that we're getting from Rajasthan in Jaipur, where the BJP is in fact carrying out the protest against the Ashok Gehlot government for misbehaving and in fact detaining and keeping them at an undisclosed location. The protesters, the widows of the martyrs of the Pulwama attack who had been protesting, and we had seen those images of the Rajasthan police in fact detaining them and keeping them at an undisclosed location, so much so that even now no one really is coming out to clarify as to where they're being kept and why their voices are being crushed, as well as to why the Ashok Gehlot government is not even willing to hear out the Veer Naris, the widows of the martyrs who laid down their lives for this nation. Let me once again go across to my colleague Piyush Ori, who's on the ground at that protest, the images of which we're putting out on your screens. Piyush, if you can hear me, tell us more about what's going on the ground right now. What is the BJP saying? I heard some of the people that you were talking to say that there were some BJP leaders who were trying to go to meet with these widows of the martyrs who were actually protesting. What is the update with that? What is the BJP saying that the Ashok Gehlot government failed to do? So you rightly mentioned, Priyanka, that yes, there were some BJP leaders who had gone over there to meet the widows of the martyrs. In fact, what we were told is that the Bharatpur MLA, where one of the widows reside, had gone over there yesterday to meet her.
but they were denied, that MLA was denied the permission of meeting that widow by the Rajasthan police. So you can understand the situation and the stance which has been taken by the Rajasthan police of not trying to... Having said that, let me just show you the visuals over here. You can see that there are hordes of BJP workers now who are protesting over this entire matter. But for them, the issue is simple. The assembly elections are near, and the BJP has found a very good opportunity for them to surround the Rajasthan government, which frankly is its own happening, because the way the Rajasthan government has handled the entire situation raises many questions. So you can see over here that there are several police buses which are now taking the BJP workers who have been detained to the nearby police station. But the key question over here is that these protests will come and go. The main issue will remain that what exactly would happen to the demands, to the respect, to the sanctity of the widows of our martyrs. Today we had a word with several other widows. So as I said that, you can see the police buses, you can see the Rajasthan police buses now which are carrying, which are taking the BJP workers along with them to the nearby police station. But this is not important. What is important is that will this protest result in making people realize about the ordeals of not only the widows of these three CRPF martyrs, but also several other widows of bravehearts who lay down their lives for the service of the nation. Today we had a word with several other martyrs and had a word with them. In fact, I'll just go and have a word with some of the protesters also, so that we can make you happy. भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को उखाड़ने तक लड़ाई लड़ेंगे। इस अपमान का बदला राजस्थान की जनता हर चौराहे पे लेगी, हर गली पे लेगी और कांग्रेस को उखाड़ने तक लेगी। अभी जेल में जा रहे ये दीवाने कहां चले? उनका जिस तरीके से गहलोत सरकार ने अपमान किया है, उसके विरोध में हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन के बाद में। दिखा दोगे ना भाई, दिखाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वीरांगना अपनी 3 छोटी-छोटी मांगों के लिए जब धरने पे बैठी, और धरना एक दिन नहीं, आज 11 दिन से धरना चल रहा है। और एक चीज मेरे को बताइए सर, राजनीति तो चलती रहेगी, हम राजनीति दिखते रहेंगे, आप मुझे इतना बताइए कि बीजेपी वीरांगनाओं के लिए क्या करेगी, और क्या कोई बीजेपी का नेता अभी तक वीरांगनाओं से मिला है? उनकी हालत कैसी है, क्या वो सुरक्षित है, हमें ये बताइए। देखिए, गहलोत सरकार इस तरह निरंकुश में आ गई है कि जब हमारी बीजेपी की सांसद रंजीता कोहली वो तो वीरांगना से मिलने गई, तो आपने सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया, सांसद को मिलने नहीं दिया। हमारे केवड़ीलाल जी मीणा जब शाहपुरा से मिलने गए वीरांगना, तो उनको जबरदस्ती रोक लिया, उनके साथ मारपीट की, कपड़े तक फाड़ दिए। ये वास्तव में तानाशाही है। जो बॉर्डर पे सैनिक देश की सेवा करते हैं और उनके धर्मपत्नी वीरांगना जिसके साथ में ये राजस्थान सरकार इस तरीके का जो वसूल करती है, वो बहुत निंदनीय है।
आप युवा है, आप मुझे बताइए कि जो सरकार का रवैया है यहाँ पे, आप उससे संतुष्ट हैं? और आप मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे वीरांगनाओं के सम्मान के लिए? सरकार का बहुत ही निंदनीय रवैया है और 14 फरवरी 2019 आप सभी युवा साथियों को याद होगी, जिस टाइम हमारे पुलवामा पर बॉर्डर पर 40 शहीद हुए थे, उनकी मांग को लेकर, उनकी वीरांगनाओं की मांग को लेकर डॉक्टर साहब आंदोलन कर रहे थे। गहलोत सरकार के निकम्मेपन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ जो प्रदर्शन रहा पुलिस का, उसके खिलाफ। वीरांगनाओं का सम्मान कब मिलेगा? राजस्थान में वीरांगनाओं का सम्मान कब मिलेगा? वो सबसे बड़ा मुद्दा है, बताइए। भाजपा की सरकार आएगी, 8 महीने बाद जब सम्मान मिलेगा। गहलोत सरकार से कोई हमको उम्मीद नहीं है कि कोई सम्मान देगी। बताइए आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट बताइए आइए। हाँ, राजस्थान सरकार डॉक्टर साहब को मारना चाहती थी। वीरांगनाओं का सम्मान कब मिलेगा? इस देश में वीरांगनाओं का सम्मान कब मिलेगा? वो पूछे वाली बात है। वीरांगनाओं का सम्मान जब तक गहलोत सरकार इनको नौकरी नहीं देगी, इनको बड़ा पैकेज नहीं देगी, और जब तक जो पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की है उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। आ जाओ यार। एक मिनट, आप महिला है, आप इधर आओ। आप महिला है, यहाँ पे जो आपको लगता है कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है? नहीं, ये क्योंकि वीरांगना का सम्मान बिल्कुल ये वीरांगना नहीं, आम पब्लिक की भी बात है। जिस तरीके से पुलिस का बर्ताव है वो सही नहीं है, और हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस तरीके से रोडों पे लड़ते रहेंगे। जब ये एक 72 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ इस तरीके से कर सकते हैं तो आम पब्लिक इनके लिए क्या है? हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा के लिए जान देने के लिए तैयार है। अगर बाबा को छोड़ा नहीं गया तो जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। बाबा वीरांगनाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, इसलिए बाबा के साथ पाकिस्तान नहीं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। जिस व्यक्ति ने सर्व समाज के लिए संघर्ष किया, तो ये सीओ में है। वहाँ पे ये राजस्थान की सरकार हर कोने पे हर चीज में विफल है, और ये डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का मीणा का अपमान नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी का। और जब तक उनको सम्मान नहीं मिलेगा शहीद परिवार को, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक काम करेगा, नीचे तक सरकार की ईंट की ईंट बजा देगा। उनको सरकार ने गायब कर रखा है, ये मीडिया को तक को नहीं छोड़ रहे। तो मैं समझता हूँ इससे घटिया सरकार देश में नहीं हो सकती, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। So you can see over here that there are several voices that are coming in of people raising their objections and angst against the Gehlots government. They are being detained over here. You can see the dramatic visuals over here. But again, as I said, the key question is that will this eventually lead to respect and honor for the martyrs' families? We are going to keep you updated of all the happenings over here at the protest site in Rajasthan. Stay tuned to Republic Media Network. See you on the other side of the break. Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka and MLS Sun is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLS. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it?
आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, गरुड़, मार्कोस, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वॉज एट दैट टाइम CEO of 6AR, और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी अच्छा टू ट्रेन हिज रेजिमेंट, एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी आल्सो। सर, इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा मार्शल आर्ट्स। बिल्कुल जी, आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है, बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना। यू हैव टू कंट्रोल दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग। सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से। I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Arun Ramachandra Pillai and Abhishek Bonpally. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpally? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. Welcome back, viewers. We stay with the images that we are getting from Rajasthan, where in fact in Jaipur, where the protest is being carried out by the BJP over the widows of the martyrs of the Pulwama who were protesting and now being kept at an undisclosed location. Piyush is joining us. मैं बोलूंगा कि करोड़ी लाल वो व्यक्तित्व है जो पाड़े का भी दूध निकाल दे। वो डरने वाला नहीं है, वो सड़क पर लड़ने वाला है, वो स्वस्थ होएगा, फिर इन सड़कों पर आएगा, फिर इस सरकार को झुकाएगा और निश्चित रूप से लोगों की मांग पूरी होगी। वीरांगनाओं के साथ जो बदतमीजी हुई, जो दुर्व्यवहार हुआ, सर ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। Those are the voices coming to light from Jaipur. And Piyush, if you can hear me, over to you. Get us the latest of the protest that you're covering right now. Yes, Priyanka, I would want you to also have a word with the BJP women worker because it is their voices that also matters. मैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ अलवर से हूँ और इस गवर्नमेंट ने जो हमारा अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें सम्मान दिया है, हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैम, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं है, ये महिला सम्मान के बारे में है और ये वीरांगनाओं के बारे में है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं बताना चाहूंगी कि हम ये अपमान नहीं सह सकते। वीरांगनाओं के साथ जो अपमान हुआ है, इसको हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और ये जो हमने जो आज धरना दिया है, ये उग्र धरना है और आगे तक भी रहेगा ये। महिला सम्मान के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? महिला सम्मान के बारे में और इसके बारे में उनको गहलोत जी को सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। इससे ज्यादा उनके लिए कुछ ही नहीं है, क्योंकि वो शर्म तो बिल्कुल ही बेच खाए है। आप क्या कहना चाहोगे? आप युवा है, आपका क्या कहना है? ये जो कांग्रेस का जो कर रही है वो बहुत गलत है।
ये कांग्रेस और बीजेपी के बारे में नहीं है, ये वीरांगनाओं और महिला सम्मान के बारे में। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस सरकार जो वीरांगनाओं के बारे में बोल रही हो गलत है, क्योंकि अशोक गहलोत तो वीरांगना इतने दिनों से धरने में बैठी है, मगर अशोक गहलोत कुछ नहीं बोलता। तो जैसा मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये संदेश, जो प्रदर्शन का संदेश पूरा देश भर देख रहा है। क्या कहना चाहोगे जो वीरांगनाओं के सम्मान के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो गहलोत सरकार ने किया है वो बहुत गलत किया है। आप क्या करोगे जब आप पाबंद होंगे? गहलोत सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत सरकार मुर्दाबाद। गहलोत सरकार के बारे में नहीं है ये वीरांगनाओं के बारे में और महिला सम्मान के बारे में। उनका अपमान किया है, उनके सम्मान में उतरी है पब्लिक। डॉक्टर साहब, आप महिला हो, आपको वीरांगनाओं के बारे में क्या बोलना है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? उनको न्याय मिलना चाहिए और गहलोत सरकार को हटना चाहिए यहाँ से। गहलोत सरकार ने सबको तानाशाही जो कर रखी है, गहलोत सरकार को हटना चाहिए। महिलाओं को न्याय दिलाओ, वीरांगना को न्याय दिलाओ। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। So here you can see the dramatic visuals, which you can see the BJP workers being detained and taken by the Rajasthan police to the nearby police station. But we at the ground over here are going to continue to demand for the respect, honor and the safety of the Veer Naris that have been detained by the Rajasthan police to an undisclosed location. Stay tuned to Republic Media Network as we see you on the other side of the break. Stay tuned. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, whether it's kung fu, whether it's other martial arts that you've learned so many, शाओलिन कितना टफ है? सर बहुत टफ था। वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज। हमारा पहला एक्सरसाइज होता था 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में, एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल, देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और हमारी टांगें ऐसे हिल रही होती थी, एंड my each and every part of my body was paining, it was crying, muscles were sore। मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था। Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka and MLS Sun is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLS. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं and then you start special forces, NSG, गरुड़, मार्कोस, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वॉज एट दैट टाइम CEO of 6AR, और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी। अच्छा। टू ट्रेन हिज रेजिमेंट, एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी ऑल्सो। सर इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा मार्शल आर्ट्स। बिल्कुल जी। आपकी
Welcome back, viewers. Straight away, once again, cutting across to these visuals, these images that we're picking up from Jaipur, where in fact the BJP is carrying out this protest against the Ashok Gehlot government for detaining the widows of the martyrs who were protesting and keeping them at an undisclosed location. Our correspondent Piyush Shori is on the ground and getting us those voices and very important images from Jaipur as well. Piyush, over to you. You were getting us voices. Please continue to do so. Viewers understand. So Priyanka, I will try to get more voices over here on the protest side so that our viewers understand that what is the mood of the ground. Our viewers understand that what is the mood of the ground and how actually the state also is preparing itself for the assembly elections. आपका नाम क्या है? अर्जुन यादव। किसने प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? आज किरोड़ी लाल जी के साथ जो वो वीरांगनाओं को न्याय। सर, ये किरोड़ी लाल जी के बारे में नहीं है, ये वीरांगनाओं के बारे में है। आप मेरे को तो बताइए कि वीरांगनाओं के सम्मान के बारे में आप क्या कर रहे हैं? वीरांगनाओं के सम्मान के लिए आज हम यहाँ हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। कल किरोड़ी लाल जी के साथ जो पुलिस ने वीरांगना कहाँ पे है? जो वीरांगनाएं पुलिस थाने में है और वीरांगनाओं को जबरदस्ती उठाकर ले गए। यहाँ पे किरोड़ी लाल जी के साथ जो कल बहुत ही गलत बर्ताव किया है उसके विरोध में आए, वीरांगना जो शहीदों की पत्नियों को न्याय दिलाने के लिए आए। जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। आप इसलिए मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं? देखिए, जिस प्रकार वीरांगनाओं के साथ में गहलोत सरकार ने और जो राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी जो उनके साथ बैठे थे उनके साथ बराबर तक लाठीचार्ज करके उनका जो अपमान किया है, उनके सम्मान में आज पूरी भारतीय जनता पार्टी। आप किस प्रकार से सम्मान देगी वीरांगनाओं? देखिए, उन वीरांगनाओं को उनके परिवार में नौकरी मिले। जिस प्रकार वीरांगना अपनी जायज मांगों को लेकर के इस गहलोत सरकार के समक्ष बैठी है, गहलोत सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए। So we are going to also have some more voices over here. आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नमित जैन है मेरा नाम। आप यहाँ पे मतलब प्रोटेस्टिंग करने आए हैं, तो किस लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं? और मेरे को बताइए कि यहाँ पे जो वीरांगनाओं के साथ हुआ है क्या वो उचित है और आप क्या करेंगे वीरांगनाओं का सम्मान पाने के लिए? बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जो हमारे नेता किरोड़ी लाल जी मीणा इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए खड़े थे, उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। ये गहलोत सरकार की गुंडागिर्दी है, ये गहलोत सरकार की तानाशाही है, ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। So here you can see Priyanka, you are seeing host of BJP workers over here trying to raise their angst over what has really happened, and as you can see the BJP workers over here are also preparing. तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कभी वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, और सवाल जनता ये पूछ रही है कि जो जनता के सवाल हैं उनका उत्तर आप क्यों नहीं देते हैं? सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और पिछले 2-3 दिन में हमने देखा किस तरह से कट्टर बेईमान पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी कठपुतली मनीष सिसोदिया, उनको ना सीबीआई न्यायालय से कोई राहत मिली, और कल एक आदेश सीबीआई और ईडी की जो न्यायालय है उसने उनको ईडी की कस्टडी में पूछताछ के लिए दिया, और ये 7 दिन के लिए उनको ईडी कस्टडी में भेजा गया। जो बात सभी मीडिया चैनल्स पर भी आ रही थी और जो कोर्ट ने भी कहा है, मैं उस पे अपनी बात रखूंगा।
कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ मनीष सिसोदिया इज अ मस्ट। यह जरूरी है, आवश्यक है। यह कोई जांच एजेंसी की सुविधा नहीं है, यह कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है। जो शराब घोटाला शराब मंत्री पूर्व में रहे, उन्होंने किया है, इसकी जड़ तक जाने के लिए आवश्यक है कि इस भ्रष्टाचारी की कस्टोडियल इंटरोगेशन हो, मस्ट। दूसरा, एक कट्टर ईमानदार जिनको कहती है पापी आप, उनके पूर्व के उप मुख्यमंत्री के कृत्य देखिए। अगर ईमानदार इतने होते तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर देते, विनम्रता से देते। छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी चादर साफ है, घोटाला किया नहीं, भारत रत्न मुझे मिलना है। लेकिन कोर्ट क्या कह रहा है? न्यायालय कह रहा है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं और ये जांच एजेंसियों से सहयोग भी नहीं कर रहे। तो पहली बात, कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है, और दूसरा, इनके कृत्य ये हैं कि ये प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देंगे। तीसरी बड़ी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आबकारी नीति, शराब नीति वापस ली गई। अराजक अपराध पार्टी के मित्रों ने ही इसे बनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा ये शराब व्यापारी जो है ये मेरा ही बेटा है, मेरा लड़का है। इसमें मनीष सिसोदिया इंस्ट्रूमेंटल हैं। मुख्य किरदार कोई निभाता है तो वो पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया। और ये जो जवाब दे रहे हैं वो भी असत्य हैं, झूठ है। 7 दिन की इनको ईडी रिमांड पे भेज दिया गया। और ये कहना गलत नहीं होगा अगर शीर्षक देना हो इस घोटाले को, तो आज मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मुझको ना उठाओ, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मुझे इसी अवस्था में रहने दो। इसके बाद हमने देखा किस तरह से बिहार में भी जंगल राज और भ्रष्टाचार का पर्याय बनी आरजेडी, जिन्होंने जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा। ये भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि आपने अपनी जमीन दो, नौकरी लो। इनका शीर्षक ये भी है, अपनी जमीन दो, तुम गरीब हो तो क्या है, तुम्हारी जमीन पे मेरा हक है, तुम अपनी जमीन दोगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे, कानून नियम को ताक पे रखेंगे। और आज देखिए, मुझे आप सबके समक्ष एक तथ्य रखना है। नीतीश कुमार जी पहले बार बार आरोप लगाते थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई, क्योंकि यह भ्रष्टाचारी है। 27 सितंबर 2021 जनता दल यूनाइटेड का एक ट्वीट है, नीतीश कुमार जी द्वारा ही किया गया हो। क्या कहता है?
नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहिए कि जिस लालूवाद विचारधारा से आप आते हैं, उसी विचारधारा ने बिहार के तमाम किसानों के साथ छल किया। जमीन दो, नौकरी लो के नाम पर जमीन लिखवा ली गई और उसमें चरवाहा विद्यालय खोलकर महापाप किया। ये नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। आप कह रहे थे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज कार्रवाई हो रही है तो जनता यह जानना चाहती है कि पलटू राम आपको जनता इसीलिए कहती है। आप कभी कोई स्टैंड लेते हैं और अगर सहूलियत होती है तो पलट जाते हैं। क्या आपने ये मांग नहीं करी थी नीतीश कुमार जी कि लालू प्रसाद यादव जी पे, राबड़ी देवी जी पे, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। आज जब कार्रवाई हो रही है तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं, प्रथम दृष्टया जिनको न्यायालय से ना इनका मामला निरस्त हो रहा है, ना कई ऐसे मामले हैं जब बेल भी नहीं मिल रही, तो आपको यह बताना चाहिए कि आज आप तथ्यों पे बात क्यों नहीं कर रहे। अगर आप लोगों का कहना यह है कि राजनीतिक द्वेष से ये मामले हो रहे हैं, तो फिर यह बताइए कि न्यायालय जाके ये सारे जो मुकदमे हैं इनको निरस्त क्यों नहीं कराते हैं। और देखिए विरोधाभास एक और है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। जब यह गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी का स्वागत किया। उसने कहा यह ठीक गिरफ्तारी है। जनता कह रही है कि ये कैसे मापदंड हैं जिसमें ये भ्रष्टाचारी कहते हैं मेरा भ्रष्टाचार बहुत अच्छा है, इस भ्रष्टाचार में कोई गलती नहीं करी, और दूसरे का भ्रष्टाचार खराब है, इसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। क्या यह कोई पैमाना हो सकता है? मैं इतना ही कहूंगा, पुराना कांग्रेस सरकार का समय था, न्यूज़पेपर खोलिए केवल घोटाला, 2G घोटाला, 122 स्पेक्ट्रम के लाइसेंस सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए। कोलगेट घोटाला कांग्रेस के समय का 214 जो माइनिंग के लाइसेंस थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। CWG घोटाला, खेल भी कराएंगे तो उसमें भी अपनी कमीशन, अपना कट। जीजाजी घोटाला, किसानों की जमीन हड़प रहे थे। आज जनता की उम्मीद यह है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो, उस भ्रष्टाचारी को यह एहसास हो कि कानून का डंडा कितना मजबूत है। आज जनता की उम्मीद यह है, और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि इन भ्रष्टाचारियों को यह पता चले कि कानून से ऊपर यह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जनता की यह उम्मीद है, जो भ्रष्टाचारी ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जनता कह रही है न्याय होना, भ्रष्टाचार से जो रुपया वसूला है उसको वापस इन लोगों से वसूलना और जनता के हित में लगाना, यह जनता का अधिकार है, यह लोकतंत्र का अधिकार है। और इसी सोच से जांच एजेंसियां अपना कार्य करती हैं। जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं
तो ये कभी भी उस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। इनमें इतनी नैतिकता नहीं बची कि ये बाहर निकलकर आए और जनता को बताएं कि आरोप ये हैं और सत्य ये है, ये प्रमाण है, ये साक्ष्य हैं, और देखिए हम आपकी अदालत में भी आए हैं और हम सिद्ध कर रहे हैं कि हम लोग ईमानदार हैं। नहीं, अंदर से ये भी जानते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है, और इसीलिए ये ना न्यायालय जाते हैं और ना जो सवाल जनता पूछ रही है उसका ये उत्तर देते हैं। तीसरा, हमने देखा बीआरएस की नेत्री हैं के कविता। इसका शीर्षक हो तो हो गिव मी द मनी, आई जस्ट नीड मनी, गिव मी द मनी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका एक साक्षात्कार चल रहा था, उसमें इनसे पूछा गया, इनको मौका मिला, आप बताइए कि आपका इंडो स्पिरिट से बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई, इनसे कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा जिसके किसी भी कृत्य में कोई गलत कार्य, कानून तोड़ने वाला कृत्य ना हो, तो वो कहेगा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट, नो इफ एंड बट, स्पष्ट, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो के कविता की पूछताछ चल रही है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है उसका उत्तर नहीं देंगे। तो इसीलिए इस मंच से भी दोबारा यह सवाल पूछा जाना चाहिए, ये जो शराब घोटाला है जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें के कविता जी आपको भी जनता को बताना होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं है। आपको यह बताना होगा कि बुच्ची बाबू, इनसे आपका कोई लेना देना है या नहीं है। और प्रतीत ऐसा होता है, यह भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, अब जब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं तो जनता को भी पीड़ा हो रही है कि इन भ्रष्टाचारियों ने किस तरह से जनता को लूटा है और अपनी तिजोरियों को इन्होंने भरा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून अपना काम करेगा और इतनी मजबूती से करेगा कि हर भ्रष्टाचारी को कानून से डर लगे कि अगर हम 1 रुपए की भी भ्रष्टाचारी दिखाएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? तेजस्वी यादव के घर पे रेड पड़ी तो आगे में कहना है उनकी पत्नी की, गर्भवती पत्नी थी, बच्चे थे, उनको भी 36 घंटे में बंदे बना रखा के आईडी ने प्रसारित किया, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, इसीलिए मैंने कहा विक्टिम कार्ड और इमोशनल कार्ड। एक व्यक्ति जब राजनीति में है और उसके परिवार वाले घर पर हैं तो मैं समझता हूं कि उसको तो और जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। कानून की नजरों में और जनता की आंखों में अपने परिवार वालों का हवाला देना यह कोई तर्क नहीं हो सकता है, ना ही ये किसी न्यायालय में चलेगा। और परिवार के जब सदस्य खुद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हों, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी,
तेजस्वी यादव जी की बहन मीसा भारती, तो क्या जांच एजेंसी अपना काम नहीं करेंगी? और जहां तक टाइमिंग की बात है, मैं ये कहूंगा कि यही फर्क है। कांग्रेस के समय में सीबीआई पिंजरे का तोता है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। गांधी परिवार के घर से तय होता था कि टाइमिंग क्या होगी। कोई पार्टी अगर सपोर्ट विड्रॉ कर लेती थी तो उसके घर पर सीबीआई ईडी पहुंचती थी। और आज जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं, अपना काम करती हैं। वो जानती है किससे हमें पूछताछ करनी है और कब करनी है। और मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे समय से गुजर रही है, उसको खुद नहीं पता है कि उनके नेता क्या करते हैं, उनका मीडिया सेल क्या करता है। और एक लाइन में अगर मुझे कहना हो, 140 करोड़ भारतीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं। विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहना ही कांग्रेस पार्टी का अब चरित्र हो गया है। लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव इस बात का प्रमाण है कि सत्य की जीत होती है और जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरी आस्था रखती है। धन्यवाद। एक एक करके। सर, नीतीश कुमार ने सवाल खड़ा किया है तेजस्वी पर कि अब तक सीबीआई कहां थी, अब तक 5 साल तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, सवाल तो यह होना चाहिए, टाइमिंग पे मैं उत्तर दे चुका हूं इसलिए दोहराऊंगा नहीं। सवाल तो यह होना चाहिए, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसकी जांच 6 महीने पहले शुरू हुई थी। और अगर मान लें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का तर्क 6 महीने पर्याप्त समय होता है, न्यायालय जाते पूरा मुकदमा निरस्त करा देते, नहीं कराया। अंदर से जानते हैं भ्रष्टाचार किया है, किसानों की जमीन हड़पी है। और नीतीश कुमार का जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया, वो अपने आप में दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये लोग भ्रष्ट हैं और कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, यूनिटी किसी मुद्दे पे हो जो जनता के हित में हो, अच्छा है। भ्रष्टाचारियों की यूनिटी हो, ये उन पार्टियों के लिए भी अच्छा नहीं है और जनता भी इसका विरोध करती है। और सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं तो कानून के दायरे में रह के उन्हें अपना काम करने दिया जाना चाहिए। और ये जो ओछी हल्की राजनीति की जा रही है, ये अपने आप में दर्शाता है कि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और वो डरे हुए हैं। ये डर अच्छा है। I've already answered that question. Yes. I think I've already answered that question. I'll not like to repeat, but I would only tell you I can take more time and answer your question elaborately. I challenge
the Arajak Aparadha party, the Paap Aap party, the RJD and the other parties to show one order of the Supreme Court or the Honorable High Court where under the Modi regime the proceedings have been quashed. I challenge from this floor one order of the Honorable Supreme Court or the High Court where the proceedings of the ED CBI have been quashed and the reason is political vendetta. Thank you. Thank you. There you heard Gaurav Bhatia, senior spokesperson and Supreme Court advocate as well, taking on corruption and opposition parties on a number of different matters, where on one hand you see a lot of unity seemingly amid all these raids, and on the other hand a lot of cases that are pending for some time, difficult questions being posed there by Gaurav Bhatia. He's challenging this narrative that it is political vendetta. He claims that it is big time corruption and the agencies are absolutely correct in probing these matters. Let's take a look at some of the top stories now, viewers. Conman Sukesh Chandrasekhar wrote to the Delhi LG seeking VK Saxena, seeking his intervention on alleged false news being spread by the Aam Aadmi Party. Sukesh said, and I quote, Manish Sisodia, everyone should know, is lodged now in jail number 1, Ward 9, which is a VVIP ward in Tihar, where till date only high-profile VVIP persons have been lodged. After the Delhi police launched an investigation into a molestation video that went viral amid Holi celebrations, DCW Chief Swati Maliwal has tweeted, and I quote, "My blood is boiling every time I watch this video. I will not spare any of them no matter what happens. We will make sure one of these ruffians will end up behind bars." Meanwhile, the Delhi police said that they are probing the video of harassment of the Japanese woman that went viral amid Holi celebrations. They further said that 3 boys, including 1 juvenile, have been apprehended. The Delhi police said that they are waiting for a detailed post-mortem report to know the exact cause of the death of actor Satish Kaushik. A crime team of district police visited the farmhouse in southwest Delhi where the party was organized and recovered some medicines. Viewers, a lot more news coming up. Summoned in the land for jobs scam case by the CBI, Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav skips the summons, cites his wife's health. I see there are 2 pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Anil Parab and Abhishek Bonpal. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpal? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, whether it's kung fu, whether it's other martial arts that you've learned so many. शाओलिन कितना टफ था? सर बहुत टफ था. वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज. हमारा पहला एक्सरसाइज होता था 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में, एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल. देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और हमारी टांगें ऐसे हिल रही होती थी, एंड each and every part of my body was paining. It was crying. Muscles were sore. मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था. Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take?
Karnataka, an MLS son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLS. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, गरुड़, मार्कोस। किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वाज एट दैट टाइम CEO of 6AR और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी। अच्छा। टू ट्रेन हिज रेजिमेंट एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी आल्सो। सर, इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरा मार्शल आर्ट्स, बिल्कुल जी। आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना। यू हैव टू कंट्रोल दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग। सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से। I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Anil Parab and Abhishek Bonpal. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpal? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, वेदर इट्स कुंग फू, वेदर इट्स अदर मार्शल आर्ट्स दैट यू हैव लर्नड सो मेनी, शाओलिन कितना टफ है? सर बहुत टफ था। वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज। हमारा पहला एक्सरसाइज होता था, 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में, एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल, देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और हमारी टांगें ऐसे हिल रही होती थी, एंड my each and every part of my body was paining, it was crying, muscles were sore। मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था। Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka, an MLS son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLS. And CBI comes over, Pakistan is actually facing at the moment a perfect storm. We have on the one side the economic challenges that we briefly touched upon.
The other side is we have the consequences of these floods that I honestly feel that the people of Pakistan will be bearing for generations to come. We've got the challenge of terrorism that is once again bearing its ugly head as a result of the fall of Kabul. And at this time, we need the support of not only the international community, but also of international financial institutions to understand the ground realities in Pakistan, and also understand that what's happening in Pakistan today is not going to be limited to Pakistan. If we don't form a consensus around the security threat emanating out of Afghanistan, for today, those consequences are being borne by Pakistan, but tomorrow that fire could spread somewhere else. $11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी आल्सो. सर इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. पूरा मार्शल आर्ट्स. बिल्कुल. जी. आपकी फौज में भी यही है. डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू. आपके पास गन है, बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना. यू हैव टू कंट्रोल दैट. दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग. सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से. I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Anil Parab and Abhishek Bonpal. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpal? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, whether it's kung fu, whether it's other martial arts that you've learned so many. शाओलिन कितना टफ था? सर बहुत टफ था. वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज. हमारा पहला एक्सरसाइज होता था 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में. एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल. देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर. और हमारी टांगें ऐसे हिल रही होती थी. एंड my each and every part of my body was paining, it was crying, muscles were sore. मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था. Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka, an MLS son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLS. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं and then you start स्पेशल फोर्सेस, NSG, गरुड़, मार्कोस. किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब तो ही वाज एट दैट टाइम CEO of 6AR, और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी. अच्छा. टू ट्रेन हिज रेजिमेंट. एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो. जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा. एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम.
Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which Top stories at 2:30 viewers. K. Kavita joins the ED investigation in connection with Liquorgate. BRS workers protest at the ED office. Full focus on South Group link and alleged cartelization in connection with the Delhi excise policy scam. Bandi Sanjay makes objectionable remark against Kavita. Protests erupt from national capital to Hyderabad. Mega showdown in Jaipur over insult to Pulwama widows. Hundreds take to the streets. Summoned in land for job scam by CBI. Tejaswi skips summons, cites wife's health. The Federal Deposit Insurance Corporation seized the assets of Silicon Valley Bank as depositors pull cash. Straight away cutting across to some breaking updates that we're picking up now, viewers. In 2017, Anil Parab wanted to buy land in Ratnagiri, and hence he connected to Sadanand Kadam, and then he connected the Vibhas Sathe to buy the land. Anil Parab transferred 1 crore through banking transactions and 80 lakhs were paid in cash. Sadanand Kadam had also paid 80 lakhs unaccounted cash to the Vibhas Sathe on behalf of Anil Parab, and the unaccounted cash of Anil Parab was used for purchase of the land, and land value was suppressed. Now we're getting you all the details of this entire scandal as well, including the transaction details between Anil Parab and the various other leaders as well. Now Uddhav's faction leader Ramdas Kadam's brother and Anil Parab's close aide Sadanand Kadam in fact had been produced before the court by the Enforcement Directorate as well. And now we see how trouble is in fact mounting for Anil Parab, as we are seeing that the investigation into the matter by the Enforcement Directorate is also being carried out. And we are looking at how the doe also had been produced before the court. We are awaiting some more details as to what's transpired in the courtroom as well. But as of now, we are getting some inside details by the Enforcement Directorate as far as Anil Parab is concerned, and this entire scandal that had come to light and had taken place in 2017. And we had gotten some details from the Enforcement Directorate sources as well, where it was said that Anil Parab had wanted to buy a land in Ratnagiri in 2017, and because of that, for that, he connected to Sadanand Kadam, and he was also connected to Vibhas Sathe. Now, to buy this said piece of land, Anil Parab had transferred 1 crore through the banking transactions, and 80 lakhs were paid in cash. Now, Sadanand Kadam had also paid 80 lakhs unaccounted cash to Vibhas Sathe on behalf of Anil Parab, and now this unaccounted cash of Anil Parab was used for the purchase of the land, and because of that, the land value in fact had also been suppressed. There was a manipulation in the pricing of the land as well. And now we are, of course, learning that Uddhav's faction leaders, the aforementioned leaders, that is Ramdas Kadam and Kadam's brother, and Anil Parab's close aide, had been produced before the court by the Enforcement Directorate as well. Let me bring in my colleague Sandeep, who's on the ground reporting on this story. Sandeep, tell us more about what's transpired in the courtroom, where in fact the doe had been presented, and take us through the entire investigation that is being carried out by the Enforcement Directorate as well, Sandeep.
See, as far as Anil Parab's close aide Sadanand Kadam arrest is concerned, he's in fact produced in the courthouse today in the holiday court, wherein Enforcement Directorate has sought 14 days of custody of Sadanand Kadam. Remember, as far as this case is concerned, Anil Parab close men Sadanand Kadam pressurized Vibhas Sathe in Ratnagiri, Dapoli, wherein they bought a land, and in fact they built up a land between 2017 to 2019. They built up a bungalow and a resort was made. Now this resort was made by violating the CRZ norms 3, that is coastal regulatory zone norms were violated by Anil Parab and Sadanand Kadam, and in fact the architect who built up this property for Anil Parab and Sadanand Kadam had also informed Anil Parab and Sadanand Kadam that this land comes into CRZ zone 3, and this, if in case property is built, then it will violate the norms, which is illegal to be made. Now, apart from that, the land was initially brought by Anil Parab for 1 crore 80 lakhs rupees, and in fact when this issue was highlighted in media in 2019, Anil Parab initially transferred the property. In fact, not just transferred, he sold out the land to Sadanand Kadam, in fact, and in fact this property was sold for around 1 crore rupees. So apart from that, when Enforcement Directorate lawyer argued in the court, he mentioned that the land property values for around 10 crores rupees. Despite that, the value of the line was deficited, and in fact there was a money trial between both, and hence this case needs to be investigated, and hence now Enforcement Directorate has asked for 14 days of custody. Well, that's right. Sandeep there getting us the details of this new development, and now trouble is in fact mounting for Anil Parab as well. Thank you, Sandeep, for joining us and breaking down the details. Shifting our focus now, viewers, to what the Prime Minister Narendra Modi in fact had stated in the PM Vishwakarma Kaushal Samman scheme as well, where he had underlined the need for integrating the artisans from the remote areas in the mainstream value chain as well. Here's all that you need to know about what the Prime Minister had to say. इस बजट को कैसे सर्वाधिक उपकारक बनाया जाए, इसके क्या रास्ते हो सकते हैं, इसकी सटीक चर्चा की है। ये हमारे लिए लोकतंत्र का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय है। जो चर्चा संसद में होती है, जो चर्चा सांसद करते हैं, वैसे ही गहन विचार जनता जनार्दन से भी मिलना अपने आप में बहुत ही उपकारक ये एक्सरसाइज है। आज बजट का ये वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर, उनके कौशल को समर्पित है। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, और उसको अगर सरल भाषा में कहना है तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये इसी सोच का नतीजा है। इस बजट में
पीएम विश्वकर्मा योजना के ऐलान से आमतौर पर व्यापक चर्चा हुई है, अखबारों का भी ध्यान गया है, जो अर्थवेत्ता हैं उनका भी ध्यान गया है, और इसलिए इस योजना की घोषणा ही एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। Time now here for a short break, viewers. Coming up on the other side, K. Kavita joins the ED investigation in connection with Liquorgate. BRS workers protest at the ED office. Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is an understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी ऑल्सो। सर इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरा मार्शल आर्ट्स बिल्कुल। आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना। यू हैव टू कंट्रोल दैट। दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग। सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से। I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Arun Ramachandra Pillai and Abhishek Bonpal. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpal? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, whether it's kung fu, whether it's other martial arts that you've learned so many. शाओलिन कितना टफ है? सर बहुत टफ था। वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज। हमारा पहला एक्सरसाइज होता था, 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में, एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल। देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और हमारी टांगें ऐसे हिल रही होती थी, एंड my each and every part of my body was paining, it was crying, muscles were sore। मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था मैं। Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka, an MLS son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLS. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं and then you start special forces, NSG, गरुड़, मार्कोस। किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वाज एट दैट टाइम CEO of 6AR, और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी। अच्छा। टू ट्रेन हिज रेजिमेंट, एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने
एडीजी इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी ऑल्सो। सर इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरा मार्शल आर्ट्स बिल्कुल जी। आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना। यू हैव टू कंट्रोल दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग। सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से। I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Arun Ramachandra Pillai and Abhishek Bonpally. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpally? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. which we are concerned and are also trying to tackle, the urban apathy and the youth apathy. We had a session in the Indian Institute of Science yesterday. We addressed the youth there. It is in their interest, it is in the interest of democracy that the youth come, and also the urban areas. Just to say in a lighter vein, the time is spent on the social media by the youth, if even 1,000th of the time is taken out, it takes much lesser a time to put a button on the ballot unit rather than on the social media pads. So I'm sure they will come out. Friends, there are two particularly vulnerable tribal groups in the state of Karnataka. The Jenu Kurba and Koraga tribes. We have taken special efforts this time. This is again an inclusive part. आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, गरुड़, मार्कोस। किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वाज एट दैट टाइम सीओ ऑफ 6AR और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी। अच्छा। टू ट्रेन हिज रेजिमेंट एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने एडीजी इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them.
KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी ऑल्सो. सर इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. पूरा मार्शल आर्ट्स. बिल्कुल. आपकी फौज में भी यही है. डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू. आपके पास गन है बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना. यू हैव टू कंट्रोल दैट. दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग. सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम. किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से. I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Arun Ramachandra Pillai and Abhishek Bonpally. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpally? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, whether it's kung fu, whether it's other martial arts that you've learned so many. शाओलिन कितना टफ था? सर बहुत टफ था. वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज. हमारा पहला एक्सरसाइज होता था 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में. एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल. देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर. और हमारी टांगें ऐसे हिल रही होती थी. एंड my each and every part of my body was paining. It was crying. Muscles were sore. मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था. Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka and MLS Sam is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLS. And CBI comes over, takes over the entire investigation. Now shifting our focus now, viewers, to China's third-term President Xi Jinping during the ongoing annual meeting of China's parliament appointed ally Li Qiang, in fact, to the post of the premier. Here's all that you need to know about what's happening with Xi Jinping and in China. China has named Li Qiang, a close confidant of top leader Xi Jinping, as the country's next premier, nominally in charge of the world's second-largest economy. Li was nominated by Xi and appointed to the position with no dissenting voices at Saturday morning session of the National People's Congress, China's ceremonial parliament. This comes a day after Xi secured a norms-breaking third 5-year term as state leader, setting him up to possibly rule for life. Li is best known for having enforced a brutal zero-COVID lockdown on Shanghai last spring as party boss of the Chinese financial hub, proving his loyalty to Xi in the face of complaints from residents over the lack of access to food, medical care and basic services. As Premier, Li will be charged with reviving a sluggish economy still emerging from the COVID-19 pandemic and confronted with weak global demand for exports, lingering US tariff hikes, a shrinking workforce and an aging population. Agency report for Republic TV. And the Federal Deposit Insurance Corporation seized the assets of the Silicon Valley Bank as depositors pulled cash.
Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka, an MLA's son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLAs. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, गरुड़, मार्कोस, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वाज एट दैट टाइम CEO of 6AR और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी, अच्छा, टू ट्रेन हिज रेजिमेंट एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी आल्सो। सर, इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा मार्शल आर्ट्स। बिल्कुल आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना, यू हैव टू कंट्रोल दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग। सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से। I see there are two pictures that have been doing the rounds, and you are seen in that picture along with Arun Ramachandra Pillai and Abhishek Bonpally. Both of them happen to be accused in that case. You are not an accused. Do you know Mr. Pillai and Mr. Bonpally? A few of them I know, I might have known. Point here is, how are these few people that I know have been treated by ED? There are ED excesses today, there are IT excesses today, there are CBI excesses today happening in this country on the behest of a political party in power. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, वेदर इट्स कुंग फू, वेदर इट्स अदर मार्शल आर्ट दैट यू हैव लर्नड सो मेनी, शाओलिन कितना टफ था? सर बहुत टफ था वहाँ। Ladies and gentlemen, let's dive right into the top stories this hour on Superfast 50. BRS leader and daughter of Telangana Chief Minister KCR, K. Kavita, joined the ED investigation in Delhi for questioning in the Delhi liquor gate case. The BRS workers meanwhile staged a protest outside the Telangana Bhavan in the national capital as the ED questioned their leader. BRS President and Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao has vowed to repel the BJP's alleged harassment of party leaders using central agencies. As BRS MLC K. Kavita appears before the ED in connection with the Delhi liquor policy case, the KCR-led party has launched a poster war against the BJP. Posters have emerged in Hyderabad showing leaders from different parties that joined the BJP and now are not facing any agency raids.
As investigations across the country continue, Asaduddin Owaisi, the president of the AIMIM, attacked the Bharatiya Janata Party sharply, claiming that the Modi government is busy targeting the Telangana CM and his family for his leadership in the state. In a huge development in the Land for Jobs scam probe, the Central Bureau of Investigation has summoned Bihar Deputy Chief Minister Tejaswi Yadav for questioning in the Land for Jobs scam case. The agency has called the RJD leader to appear for questioning today. Former Railways Minister and RJD Supremo Lalu Prasad Yadav slammed the BJP-led central government over the ED raids at Bihar DYCM and his son Tejashwi Yadav's residence. Speaking to Republic over the central agency's actions in the Land for Jobs scam case, BJP leader and Rajya Sabha MP Sushil Kumar Modi lashed out at Lalu Yadav, saying the judicial process takes time. You give us land, we give you a job. He just kept on doing this in the IRCTC scam case. देखिए, लालू यादव आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति है और उनका एक ही नारा था, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुझे काम दूंगा। एमएलए बनना है तो जमीन दो, तो कांति सिंह को मंत्री बनाना था, जमीन लिखवा लिया, मकान लिखवा लिया। रघुनाथ झड़से को मंत्री बनाना था तो गोपालगंज का मकान लिखवा लिया। और रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने दर्जनों लोगों को नौकरी दी रेलवे के अंदर, उसके बदले में जमीन लिखवा लिया। Nitish Kumar, the Chief Minister of Bihar, took an indirect jibe at the BJP following the central agency's raids on opposition leaders in the state. While talking to the media, Nitish Kumar said, this happened in 2017 when the JDU and RJD went separate ways. 5 years went by and when we came together, raids have occurred again. बताइए ना, हम आपको बता दिए 17 में हुआ, तब फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ? अच्छा है नहीं, उस समय हुआ था। Bihar Deputy Chief Minister and RJD leader Tejashwi Yadav is unlikely to appear before the CBI in connection with the Land for Jobs scam case due to his wife's poor health. The official Twitter handle of former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has released a statement given by the Aam Aadmi Party leader, who is currently in the ED's custody. The statement says, and I quote, "You can trouble me by putting me in jail, but can't break my spirit. The British also gave trouble to the freedom fighters, but their spirits were never broken." The BJP has continued its protests over missing Veer Naris after the Rajasthan cops allegedly detained them a day before yesterday night. High voltage demonstrations were witnessed on the streets of Jaipur as hundreds participated. There was heavy police deployment in Rajasthan's Jaipur in view of the protest against the Ashok Gehlot-led government by the BJP over the Veer Naris demanding the fulfillment of promises made by the state government. Cops detained many of the protesting people. Congress leader Sachin Pilot hit out at Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot without naming him over the demands of the widows of the Pulwama martyrs. Pilot condemned the police action on the protesting women and asked on whose advice did they act. The ED has produced former Maharashtra Minister Anil Parab's business partner Sadanand Kadam before the court. The agency arrested him on Friday in a scam related to the Dapoli Sai Resort. The Gujarat Assembly on Friday passed a resolution requesting the centre to take strict action against the BBC for tarnishing the image of Prime Minister Narendra Modi with its documentary on the 2002 Godhra riots. The Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi said in the Assembly that the documentary is against the Indian citizens. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath approved the proposal for development of world-class infrastructure projects worth 465 crore rupees. In anticipation of a significant increase in the number of tourists visiting Ayodhya, the state cabinet led by CM Yogi Adityanath approved this proposal.
Conman Sukesh Chandrasekhar wrote to the Delhi Lieutenant Governor seeking his intervention on alleged false news being spread by the Aam Aadmi Party. Sukesh said Manish Sisodia, everyone should know, is lodged now in jail number 1, Ward 9, which is a VVIP ward in Tihar, where till date only high-profile VVIP persons have been lodged. After the incident of post-poll violence in Tripura last night, Congress leader Ajoy Kumar, along with 5 CPIM MPs, paid a visit to the affected areas. The Congress leader took a jibe at the BJP and said that he will raise the issue in the parliament as well. The Delhi police said that they are waiting for a detailed post-mortem report to know the exact cause of the death of actor Satish Kaushik. A crime team of district police visited the farmhouse in southwest Delhi, where a party was organized and recovered some medicines. After Atiq Ahmed's wife and BSP leader Shaista Praveen filed a plea before the Allahabad District Court claiming her 2 sons were taken away by the police have informed the family that their minor sons are in a child protection home at Khuladabad. After the Delhi police detailed and launched an investigation into the molestation video that went viral amid Holi celebrations, DCW, Delhi Commission for Women Chief Swati Maliwal has said, "My blood is boiling every time I watch this video. I will not spare any of them no matter what happens. We will make sure none of these ruffians end up escaping." Meanwhile, the Delhi police said that they are probing the video of harassment of the Japanese woman that went viral amid Holi celebrations. They added that 3 boys, including 1 juvenile, have been apprehended. Ahead of the assembly elections, Karnataka Housing Minister V. Somanna has hinted at leaving the BJP after his name was not included in the party's election management committee. The elections to the 224-member Karnataka Assembly are slated to be held in just a few months. The police seized 1,300 kilograms of heroin from a vehicle in Karimganj along the Assam-Mizoram border. 100 soap cases containing drugs from the secret chambers of a vehicle were recovered. 3 people were apprehended. A case under the NDPS Act has been registered. 2 government employees were caught red-handed for accepting bribes by the team of the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption in Assam. A case has been registered in the ACB police station on March the 10th under Section 120B and IPC 7A of the Prevention of Corruption Act 1988. Necessary legal action is underway, we are told. KPCC Working President R. Dhruva Narayan, who was 62, passed away in Mysore this morning. Dhruva Narayan, a former MP representing the Chamarajanagar Lok Sabha constituency, suffered a cardiac arrest and passed away at his residence in Mysore. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma took to Twitter to share photographs of 2 tigers after an eviction drive at the Bura Chapori Reserved Forest. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar flagged concerns over the apathy among young and urban voters during elections and called it a major challenge. He wondered why polling day is not celebrated like a festival of democracy and rather taken as a holiday. On March the 12th, Prime Minister Narendra Modi will travel to poll-bound Karnataka, where he will lay the foundation stone for projects worth over 16,000 crore rupees. The Bengaluru-Mysuru Expressway will be dedicated to Karnataka, the Prime Minister said, and the project involves a 6-lane Bengaluru-Nidaghatta-Mysuru section of NH 275. The Allahabad High Court has denied bail to a member of the Mukhtar Ansari gang in a 2010 murder case in Mau district, in which the jailed gangster-turned politician is also an accused. The court said that Ansari's gang is the most dreaded criminal gang in India, and it is possible that the accused Rama Mala would influence witnesses and their depositions in the case if he is allowed to come out of jail. The Federal Deposit Insurance Corporation in America seized the assets of Silicon Valley Bank on Friday, marking the largest bank failure in the US since Washington Mutual during the height of the 2008 financial crisis. And as regulators rush to seize the assets of one of Silicon Valley's top banks, marking the largest failure of a US financial institution since the height of the financial crisis almost 15 years ago,
Tech startups are facing serious financial trouble after the failure of the Silicon Valley Bank, the nation's 16th largest. China's Shanghai Party Secretary Li Kang became the new premier in China after being nominated for the post during a session of the 14th National People's Congress. Earlier, Chinese President Xi Jinping nominated Li Kang for the post of premier during the ongoing first session of the 14th National People's Congress. Fighting in the Ukrainian city of Bakhmut has escalated with another push by Russian forces to break through Ukrainian defense lines that have largely held firm for the past 6 months. Ukrainian firefighters in the Donetsk region are being overwhelmed by recent Russian attacks on towns near Bakhmut. Barrages of cluster bombs carried by missiles and the Urgan MLRS have set multiple houses on fire. घोटाले के प्राइम अक्यूज कहे जाते थे, मुख्य अभियुक्त कहे जाते थे, उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ दी, तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सारी जांचें उनके खिलाफ बंद हो गई। Z+ सिक्योरिटी अलग से उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पे बीजेपी ने दे दी। नारायण राणे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े पदों पे रहे, बड़े मंत्री के तौर पे भी रहे, उन पर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे दर्ज हुए। CBI, ED तमाम एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो सारे बंद हो गए। और ये एक लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट खत्म नहीं होती है। मुकुल रॉय बंगाल के नेता थे, ममता बनर्जी की पार्टी में थे, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो बंद हो गए। इसी तरह अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, के कविता, ये तमाम नेता अगर अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं, इनकम टैक्स के हों, पुलिस के हों, CBI के हों, ED के हों, वो तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। यह बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। एक तरफ मनीष सिसोदिया जी का उदाहरण है, जिन पर अगस्त 2022 में CBI, ED ने मुकदमे दर्ज करे। अगस्त 2022 से लेकर आज मार्च 2023 तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके पैतृक गांव पर रेड करी, उनकी जितनी संपत्ति है वो सारी खंगाल ली, उनके बैंक अकाउंट चेक किए, उनके बैंक के लॉकर चेक करे, उनके घर परिवार के जितने जेवरात हैं चेक करे। एक नया पैसा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक नया पैसा भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों को नहीं मिला। लेकिन फिर भी आज मनीष सिसोदिया जी को राजनीतिक कारणों के चलते ED और CBI ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खुद के कर्नाटक के विधायक, आज से कुछ ही दिन पहले एक रेड में उनके घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिला। अनअकाउंटेड इल गॉटन इलीगल वेल्थ वर्थ 8 करोड़ रुपीज वॉज रिकवर्ड। क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या उन्हें जांच में बुलाया गया? कोई जांच में नहीं बुलाया गया। और कोर्ट से इन एजेंसियों ने अपने ही बीजेपी के MLA को बेल तक दिलवा दी, एंटिसिपेटरी बेल दिलवा दी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक लौता ऐसा उदाहरण है कि कैश की रिकवरी होने के बाद, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद, 8 करोड़ रुपए की नकद राशि के साथ पकड़े जाने के बाद उस इंसान को जेल में नहीं बंद किया जाता, उसे ED और CBI कोर्ट से बेल दिलवाती है। उसके बाद उसका खूब स्वागत होता है, हजारों लोगों की
जन समर्थन रैली करवाकर, जुलूस निकालकर, रोड शो निकालकर उस शख्स का अभिनंदन किया जाता है। क्या फर्क है मनीष सिसोदिया और इस एमएलए में? मनीष सिसोदिया साहब के घर पे एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के इस विधायक के पास 8 करोड़ रुपए मिले। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जेल में है, बीजेपी का यह विधायक कर्नाटक का जेल में नहीं है। बस मनीष सिसोदिया का एक ही अपराध है कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दामन थाम के 18 लाख बच्चों की जिंदगी बदलने का काम किया। और बीजेपी ने जब जब कहा हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, मनीष सिसोदिया ने कहा मैं जहर खाना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं करूंगा। यह अपराध है मनीष सिसोदिया। मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीआई की कार्यशैली। सीबीआई ने पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 अंत तक जितने मुकदमे दर्ज करे, उसमें से 95% मुकदमे विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पे दर्ज करे। 95% ऑफ द corruption cases, alleged corruption cases registered by the Central Bureau of Investigation since 2014 to 2022 have been cases against members of non-BJP political parties, members of the opposition. मैं आपको बताना चाहूंगा पार्टी वाइज ब्रेकअप कि कितने मुकदमे सीबीआई ने कौन सी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 30 नेताओं के ऊपर, 30 लीडर्स के ऊपर सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हैं। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 26 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। आरजेडी, बिहार की पार्टी है, आरजेडी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। बीजू जनता दल, उड़ीसा की पार्टी, नवीन पटनायक साहब की पार्टी, बीजू जनता दल के 10 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। वाईएसआरसीपी, आंध्र प्रदेश की पार्टी, इनके खिलाफ 6 मुकदमे सीबीआई के दर्ज किए हुए हैं। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके 5 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, टीडीपी, उनके खिलाफ 5 मुकदमे सीबीआई ने दर्ज करे हैं। आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी, इसके खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे। समाजवादी पार्टी, 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। एआईएडीएम के 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। सीपीएम, वामपंथी सीपीएम के खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हुए। एनसीपी, 3 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे दर्ज करे हुए। एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। डीएमके, 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। पीडीपी, 1 नेता के खिलाफ सीबीआई का मुकदमा। टीआरएस, 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। यह सीबीआई की कार्यशैली। इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो और भारत के लोकतंत्र को एक तंत्र में बदल दो, तब्दील कर दो। कन्वर्ट डेमोक्रेसी इनटू ऑटोक्रेसी एंड मेक इंडिया एन ऑपोजिशन लेस कंट्री। एक ही लक्ष्य है कि भारत देश में एक ही पार्टी हो और एक ही नेता हो, और कोई गैर भाजपा पार्टी या गैर भाजपा नेता इस देश में सर उठाने की भी हिम्मत ना करे। एक एक नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, जेल में डालो। पार्टियों की दुकानों पर, पार्टियों की राजनीतिक जो कार्यशैली है, जो उनकी इलेक्शन लड़ने की क्षमताएं हैं, जैसे पार्टी चलती है, उस सब को खत्म करो, बर्बाद करो, और एक ही पार्टी इस देश में बचे, भारतीय जनता पार्टी। ये लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने की, तब्दील करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश चल रही है। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है
कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। जहां तक मनीष सिसोदिया जी का सवाल है, हमारे नेता मनीष जी का सवाल है, कल सीबीआई कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने वाली थी। जितने भी उस मुकदमे में अभियुक्त थे, कथाकथित अभियुक्त, सबको बेल मिल गई। मनीष सिसोदिया जी को भी बेल मिलने वाली थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित करने का और बेल देने का विचार बना लिया था, लेकिन मनीष सिसोदिया जी को बेल ना मिले, इसके चलते सीबीआई ने अपने वकील को ही पेश नहीं किया। वकील को ही पेश नहीं किया और वकील को कहा कि आप छुट्टी पे चले जाओ। वकील पेश नहीं हुआ, उसके चलते 11 दिन बाद की तारीख पड़ गई। 11 दिन और आप सीबीआई की जेल, सीबीआई की कस्टडी में बिताइए। और यह कम था तो सीबीआई के साथ साथ ईडी ने भी मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने का मन बना लिया। सेम केस, सेम फैक्ट्स, सेम सवाल, सेम जवाब, सेम सबूत, सेम रेड, बस कभी एक एजेंसी पकड़ लेती है, कभी दूसरी एजेंसी पकड़ लेती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एजेंसी खेलकर विपक्ष को बर्बाद कर रही है, विपक्ष को खत्म कर रही है, और मकसद बड़ा साफ है कि इस देश को वन नेशन, वन पार्टी, वन लीडर में तब्दील कर दिया जाए। इस देश में और कोई नेता ना बचे और लोकतंत्र भारत देश का एक तंत्र में तब्दील किया जाए। जो सीबीआई कोर्ट में हम लोगों ने देखा कि सीबीआई ने कार्रवाई ना हो, बेल की कार्रवाई आगे ना बढ़े, मनीष सिसोदिया जी को बेल ना मिले, इसके चलते अपने वकील को ही पेश नहीं किया। यह साफ तौर पे यह दिखाता है कि ये एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसे अब्यूज करना लग गई हैं। दिस इज द क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, कि बेल ना मिले इसके लिए वकील ही पेश ना करो। वकील पेश होगा नहीं, बहस होगी नहीं, कोर्ट कार्रवाई करेगा नहीं, तारीख पे तारीख पड़ेगी, और जो शख्स है जिसे जेल में बंद किया है वो जेल में सड़ता रहेगा। आम आदमी पार्टी इन जेलों से नहीं डरती, आम आदमी पार्टी इन एजेंसियों से भी नहीं डरती। एक संघर्ष से, आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी है आम आदमी पार्टी। इनकी जेलों से, मुकदमों से, ईडी से, सीबीआई से हमें डर नहीं लगता, बल्कि हमें तो याद आता है वो संघर्ष का समय जब देश को गोरे अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए भारत देश के कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने महीनों, सालों जेल में बिताए, अंग्रेजों की उस क्रूर हुकूमत से लड़ाई लड़ी और अंत में विजयी हुए। गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन आज इस देश पे काले अंग्रेजों का शासन है। आज मनीष सिसोदिया उसी स्वतंत्रता सेनानी के दिखाए गए नक्शे कदमों पे चलकर खुशी खुशी जेल गए। संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और अंत में विजय सत्य की होगी, विजय अच्छाई की होगी, बुराई की हार होगी, विजय सत्य की होगी, असत्य की हार होगी, और अंत में जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बीजेपी को आप काले अंग्रेज कैसे रेफर कर रहे हैं? इस देश में अंग्रेजों के समय जो हुकूमत थी, जो भी आवाज बुलंद करता है सत्ता के खिलाफ उसे पकड़ के जेल में डाल दो। आज भी इस देश में ऐसा हो रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसे पकड़ के जेल में डाल दो। मैंने आपको इतने विपक्ष के नेताओं के नाम लिए, इन पर मुकदमे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिलता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसे एजेंसियां छोड़ देती हैं, उससे मुंह फेर लेती हैं, कोर्ट में उसे बेल दिलवा देते हैं, रोड शो करवाकर उसे कोर्ट से बाइज्जत बरी करवाते हैं। क्या इस देश में 2 कानून है?
क्या इस देश में दो मापदंड हैं भ्रष्टाचार, कथाकथित भ्रष्टाचार के मुकदमों में जांच करने की? लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, लड़ाई विपक्ष के खिलाफ है. द फाइट इज नॉट अगेंस्ट करप्शन, द फाइट इज अगेंस्ट द ऑपोजिशन. भारत को ऑपोजिशन मुक्त करो, विपक्ष मुक्त भारत बनाओ. एक भी नेता बचना ना पाए. कोई गली मोहल्ले में कोई गैर भाजपा का छोटा नेता, कोई गली मोहल्ले का भी गैर भाजपा या भाजपा का विरोध करता कोई गली का नेता भी ना बच पाए. सबको पकड़ के जेल में डालो. इस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चल रही है. एक सवाल ये है, अभी मनीष सिसोदिया को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है. ये कविता की क्वेश्चनिंग हो रही है और ये तर्क दिया जा रहा है ईडी के सोर्सेस के थ्रू कि एक साउथ ग्रुप था, एलिजेड साउथ ग्रुप था, साउथ कार्टेल था, जो लिंक था की कविता से और उनका कनेक्शन आपकी पार्टी से था इस पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए. किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं डिटेल में चला जाता हूं. किसी भी इन्वेस्टिगेशन की बेडरॉक पे बेसिस होता है रिकवरी. भ्रष्टाचार हुआ, कहते हैं 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया. अब कहां है वो 10,000 करोड़? 10,000 करोड़ इंसान कहीं रखता है, कहीं सोना खरीदता, कोई जेवरात खरीदता, कोई गाड़ी खरीदता, कोई जमीन खरीदता. कहां गए वो 10,000 करोड़ रुपए? और वो कौन सा 10,000 करोड़ का घोटालेबाज शख्स है जो सुबह 6 बजे स्कूल की इमारतें देखने निकलता है कि दिल्ली के स्कूल की इमारतें ठीक कराऊंगा, मैं डेस्क लगवाऊंगा, क्लासरूम में बोर्ड लगवाऊंगा, पेन पेंसिल चौक डस्टर किताबों का अरेंजमेंट कर कर बच्चों को दूंगा, स्कूल्स को दुरुस्त करूंगा. अरे कौन सा भ्रष्टाचारी ऐसा काम करता है? कहां है पैसा? वेयर इज द मनी? और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ये पॉलिसी जिसका आप बार बार हवाला देकर एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पॉलिसी तो आपके उपराज्यपाल ने बनाई, आपके उपराज्यपाल ने लागू करवाई, आपके उपराज्यपाल ने उसमें संशोधन करा कर उसे अंतिम रूप दिया, उसे लागू करवाया. उपराज्यपाल को तो आप नहीं बुलाते. उपराज्यपाल को भी पकड़ के उसी ईडी की जेल में डालो जहां मनीष सिसोदिया को डाला है. उपराज्यपाल को नहीं पकड़ोगे, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दोगे. अति हो गई है. एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि. इसके अंग्रेजी अनुवाद है, दोज whom the God wants to destroy, he first makes them mad with power. आज ये दोनों कथन भारतीय जनता पार्टी पर लागू होते हैं. अति हो गई है इस देश में. गदर मचा दिया बीजेपी ने. सारे विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो. लोकतंत्र ना बचने पाए हिंदुस्तान में, एक तंत्र में तब्दील कर दो. देयर शुड बी नो डेमोक्रेसी, ओनली ऑटोक्रेसी. There should be one nation, one leader, one party. No non-BJP party should even exist in this country. That is the end goal. That is the objective. राघव जी, आसादुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है. उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को सेकुलरिज्म का कुली बना दिया गया है. जब चुनाव आते आज मुख्य तौर पर CBI ED की कार्रवाई पर आज की चर्चा थी. इस विषय पे फिर आराम से बात करें. थैंक यू. क्या मोहित जी? So you just heard Raghav Chadda of the Aam Aadmi Party repeating the claim of various opposition parties that the BJP is something akin to a washing machine without detergent, where you put leaders who have allegations against them and they come out spotless. This is even as opposition parties continue to unite amid the raids and crackdowns on various corruption cases against them. We are tracking this very closely. K. Kavita is being questioned by the ED. She is currently with them at the moment. We'll be getting you more on this as the politics continues. Viewers, stay with us. 11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, whether it's kung fu, whether it's other martial arts that you've learned so many. शाओलिन कितना टफ था? सर बहुत टफ था. वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज
हमारा पहला एक्सरसाइज होता था 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में, एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल, देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और हमारी टांगें ऐसे हिल रही होती थी, एंड माई ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी वॉज पेनिंग, इट वॉज क्राइंग, मसल्स वॉज सोर। मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी, कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था मैं। Bharatiya Janata Party is making it very clear that look, it's our own government, but we are starting our own investigation. We are doing it. What moral ground can K. Kavita or Manish Sisodia take? Karnataka and MLS son is caught with 8 crores. They want to do an investigation with Lokayukta. Now in Telangana, we red-handedly caught agents of Bharatiya Janata Party trying to purchase our MLS. And CBI comes over, takes over the entire investigation and says states cannot do it, we will do it. Now in Karnataka, if Lokayukta can do it, why in Telangana SIT cannot do it? आप इंडिया आते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पेशल फोर्सेस, NSG, गरुड़, मार्कोस, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने? कर्नल साहब, तो ही वॉज एट दैट टाइम CEO of 6AR, और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी, अच्छा, टू ट्रेन हिज रेजिमेंट, एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुकरी ट्रेन करो। जब मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, दे गेट द बेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। Focusing about the future of your party, 21 years after it was founded, now you've taken the national foray. The BRS has come into the picture. You're looking at stitching an alliance, and which becomes far more difficult. We've seen in multiple states there isn't any coordination between the opposition parties. So how exactly are you really looking at? Our goal right now for 2024 is to dislodge the current Bharatiya Janata Party government at the center. For that goal, whoever has a similar line of thinking, we will work with them. KCR Garu had gone to meet Mamta Di, then he has gone to meet Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji. Every single politician in this country, Honorable KCR Garu has approached to make sure there is a understanding. कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी आल्सो। सर, इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा मार्शल आर्ट्स, बिल्कुल जी। आपकी फौज में भी यही है, डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड। K. Kavita joins ED's investigation in connection with Liquorgate. BRS workers protest at the ED's office. Full focus on the South Group link and alleged cartelization in connection with the Delhi excise policy scam. Bandi Kumar Sanjay makes objectionable remark against Kavita. Protests erupt from the national capital to Hyderabad. Mega showdown in Jaipur over the insult to Pulwama widows. Hundreds take to the streets. Summoned in the land for jobs scam by the CBI, Tejaswi skips the summons, cites his wife's health. The Federal Deposits Insurance Corporation seizes assets of Silicon Valley Bank as the depositors pull cash in the US. Viewers, we have a breaking story with regards to the BBC and double standards. The BBC has made it clear that there will be zero criticism of the UK government's policies, and it has done this by censoring displays of intolerance
and sacking Gary Lineker, the legendary former England striker who has been hosting one of its most popular programs, Match of the Day, since over 20 years. Gary Lineker had criticized on social media the new asylum policy of the Rishi Sunak government. He has been taken off air. To tell us more, we have our political editor, Aishwarya Kapoor. Aishwarya, over to you. What has the BBC done? Well, what the BBC has done is that their dual standards in reporting and journalism has come out in complete world presence now. Ankit, what they have done, that they have shown zero tolerance towards any criticism towards their own government. Imagine this. And they want to teach the world about journalism, and they want to teach the world about criticizing other governments when they are not ready to accept any criticism of their own government. And it's a clear example. The BBC has shown zero tolerance towards their own people criticizing their own government on their broadcaster. So all of those teachings, all of those groups internationally who are coming out in support of the BBC when the government of India acted correctly at that point of time are quiet because now the true colors of not only those and those groups and those particular individuals, but also that of the BBC, and are out in the open. And if you see very clearly, the action taken by them, as you yourself were just indicating, that BBC has made it clear that zero criticism of the UK government. BBC has censored and they have displayed intolerance by sacking Gary Lineker, who is a legendary footballer and a BBC sport commentator. Why? Why, if someone may ask? Only because Gary criticized the British government's immigration policy? So what? There cannot be any criticism and you want to criticize the world? Who do you want to teach? So the issue is that Gary had criticized the British government's immigration policy, so the BBC, by sacking him, has made it clear that there will be absolutely no criticism, and I repeat, absolutely no criticism of the UK government on the BBC on air. And then they want that the world should accept their criticism, the world should accept their cynicism when they comment on other governments, and I am being very particular about government of India. Why, Ankit? Why, and where are those groups? Even I am asking those particular group of individuals, even Indian citizens, who are questioning government of India's action on the BBC. Now have they got their answer? That you have a BBC who tries to preach the world, but what do they teach themselves? This, that you sack a legendary footballer only because he criticized the immigration policy. Ankit, there will be not one, but more than 1,000 instances of criticism of Modi government in India. But there has been no sacking of that regard. But the BBC has made it clear by sacking this legendary footballer, sportsperson, that they will not allow any criticism of their own government on the BBC. And that is crystal clear. Now, Ankit, back to you in the studios. Absolutely. Aishwarya, they're spelling out precisely why there are double standards by the BBC, why this is such a crucial matter, because Gary Lineker is someone who has been a voice of football for over 25 years. He is also played, of course, at the highest level, leading England to what many say is their best performance at a World Cup in '86 and then in '90. However, his policy criticism of the UK government has led to such a backlash from the BBC that he has been suspended from the show. Also, there appears to be, Aishwarya, a boycott of the BBC by key members of the England football team alumni, the Alan Shearers, the Ian Wrights of this world, who regularly appear alongside Gary Lineker, are also not going to participate in the BBC shows, is what reports are telling us at the moment. This is in sharp contrast to where in other countries